the word leaders is the third word. Shaping and future is always going to go hand in hand. Because when you shape something which is new. When you mold something which is existing. So the word Dr. Devaney actually thought about is shaping, and shaping can only happen for something which is coming up new. And who can shape tomorrow? People like you who are going to be tomorrow. So innovation is at the center of all that will happen in the country, in the globe, and each one of you in this room should spend at least 30% of your time in thinking what is possible. And what is possible can only be thought when you stop thinking what is not possible. Because you cannot solve a problem by the same mind which created it. आपको अपना mindset change करना है to think innovation. Let's go to inclusivity. Today everything is social. We are here. Somebody is watching us live. Somebody is giving us comments. Somebody is saying, "Why is this topic happening?" It's inclusivity. It's about getting people together. It's about getting ideas together. It's about platforming. It's about aggregation of content. It's about thinking कि हम क्या लोगों से assimilate करके सीख सकते हैं. It is not the time कि मेरा मुझको अर्पण है. It's about हम सब का साथ लेके चलेंगे. And I will talk more about it when I sit in the panel. वैसे भी लखनऊ की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत सुना था और देख भी लिया, लेकिन ये पता चल गया कि डॉक्टर द्विवेदी ने बोला है कि मुश्किल प्रश्न पूछिएगा, जरूर पूछिएगा और मेरे से ज्यादा पूछिएगा. मैं पुणे उन्हें बिठाया हुआ है, तो ऐसा मत करिएगा. मैं भी आप ही तरह. That is also part of मेहमान. तो चलिए यूपी के मेहमान नवाजी लखनऊ की में ये तो नेता के प्रश्न करता हूँ. लेकिन कोई बात नहीं, हम भी डॉक्टर द्विवेदी के चेले पढ़ के आए हैं. Integrity. Integrity has never been so important than today. आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे ये सेशन 10 साल के बाद करें या 10 साल पहले हुआ हो, if there is one thing constant, that's integrity. And Mishra ji spoke about Ratan Tata ji, a legend, a person who has no match today, tomorrow, day before. Always lived by one principle. That is it going to benefit people at large? आप लोगों ने शायद मीडिया में पढ़ा होगा that when the current chairman, Mr. Rajan Chandrasekhar, spoke to Tata that I want to renovate Bombay House, which is the corporate headquarters of Tata Sons, which is a heritage building. He did not say कितना लगेगा. He said what will happen to the pets there? वो जो strays हैं, जो pets हैं, उनका क्या होगा? That's all his question was. That is integrity. When you look at people and give them, in spite of it, they can't give back to you. Integrity is also about doing the right thing when nobody is watching. ध्यान से सुनिएगा एक बार. कोई देख नहीं रहा है तब इंटेग्रिटी देखी जाती है. और इंटेग्रिटी तब देखी जाती है जब आपके पास गलती करने का मौका होता है. आप कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ, because this is against my moral principles, or this is against the way I have been brought up. और वो आपको बजट करना पड़ेगा. बड़ा आसान है टेम्पटेशन में फंस जाना. जैसे कि बोलना कि मुश्किल सवाल पूछो, ये भी तो आसान नहीं है, मुश्किल है. ये मुश्किल सवाल पूछने के लिए बोल दिया, पूछना पड़ेगा. बट डॉक्टर साहब इज ट्रू टू द पर्पस. उन्होंने कहा मिसिंग रोटी की बात है, पहले सवाल का जवाब चाहिए. बिकॉज़ हम यहाँ तो सीखने सिखाने आए हैं डॉक्टर साहब. सो इंटेग्रिटी एक्चुअली इज ट्रूली व्हेन यू आर ट्रू टू योर पर्पस. और एक बात आई थी थोड़ी देर पहले कि सक्सेसफुल लीडर्स, I will not say successful, I'll say purposeful leaders. आपका purpose क्या है? अगर आपका purpose है, उससे आप align कर देंगे, successful. That's very important. Thank you. Thank you, Aditya. Thank you so much. I just take 1 minute to close, Dr. Sir. आपने बोला था तो बोलना पड़ेगा. He said 2 minutes. I have 30 more seconds to go. And the clock is in my mind. Last 2 words. Leadership is not a position or title. Leadership is about taking charge of a situation and trying to solve them. The MCs, the anchors were leaders here today. Surinder, who was organizing for us, was a leader today. All of these people are leaders today. You are leaders today. And I'm very grateful for having me here. Thank you very much. I have come here to learn. And trust me, you have to be equally nice to just like I've been. Yeah? Thank you very much. Have a good day. Thank you. So let's have another leader from other industry, Sri Tripathi ji.
Patil ji, over to you. Please give a loud applause to the Patil. कभी को ऑल नाम तो आप लोगों ने मेरा पढ़ लिया होगा और कभी ऐसे प्रोग्राम में मैं जाता हूँ कॉलेज के मुझे क्योंकि आई हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 27 इयर्स इन HR तो मुझे शीट तो यही मिलती है, लेकिन जब भी आप जैसे लोगों के बीच में जाता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं उसी आई पास आउट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर आपको मैंने कभी बताया नहीं, मैं बीएचयू का ही पढ़ा हूँ। बनारस में मैंने अपने स्कूल किया, वहीं बीएचयू में गया, उसके बाद जॉब किया। ये कल्चर, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी, क्या क्या चीजें पढ़ी। बहरहाल थैंक्स SMS management, particularly Sarath sir, he has invited me. I feel most privileged. Dr. Dividi sir, जो हम लोग के HR fraternity में, अगर आप मीडिया में देखेंगे, सोशल मीडिया में प्रेजेंस, तो हम लोग इनके फॉलोअर हैं, आखिरी फॉलोअर हैं। राघवेंद्र मिश्रा सर बहुत ही सीनियर है, इनसे भी आप बहुत सारे इंसाइट्स लेंगे लाइफ के बारे में और अपने कैरियर के बारे में, हाउ आई बिकम ए फ्यूचर लीडर। देखिए इस पूरे सेशन को अगर मैं कहूँ, हम लोग पैनल में स्पीकर हैं, someone has given this name, shaping future leaders, innovation, inclusivity और integrity। बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि शरद सर अगर इस पे सेमिनार करें या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं लाइक इनोवेशन पे, कम से कम इनोवेशन इतनी छोटी चीज नहीं जिसको हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर आपको टीच कर सकते हैं, है ना साहब? पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग आए हैं तो आपको ही देखने आए हैं और आपको ही सुनने भी आए हैं। नौकरी तो करते ही हैं, 365 days we are doing our job। बहुत सारा हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक कोई टाइम नहीं मिलता और टास्क के ऊपर एक टास्क रखे जाते हैं जिसको अचीव करना HR वाली की ड्यूटी है। स्टार्ट फ्रॉम हायरिंग से लेकर के सेपरेशन तक और आपके वेलफेयर तक, तो टाइम नहीं मिलता। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पीछे वाले लोगों से, जो सेशन है और जो इस सेशन पे जितने रिसोर्स यूटिलाइजेशन SMS ने किया है उसका भरपूर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि जब आप लोगों के बीच जाते हैं ना तो ये लगता है कि यार जब मैं पीछे बैठा करता था अपने बीएचयू के सभागार में, तो ऐसी इंटरव्यू होती थी पीछे से, तो कभी कभी टीचर्स क्या करते थे, आप बेटा वो लगा देना, कुंडी लगा देना कि कोई पीछे से लेट रहा है। लगता नहीं था कि यहाँ जो टीचर है जो पढ़ा रहा है वो मेरे लिए नहीं, उसको तो ड्यूटी कर रहा है, वो उनको सैलरी तो फैकल्टीज को मिलेगी, क्या लर्न करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उस समय नहीं लगता, उस समय टाइम मैनेजमेंट का कुछ ज्यादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मतलब टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन जिस कैटेगरी में आप लोग हैं ना, मेरा आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे अधिक बड़ा अगर कोई रिसोर्स आपकी लाइफ में, इस लाइफ में when you are studying a course, तो वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना है। मैं फील करता हूँ कि मैं कुछ और चीजें कर सकता था, लेकिन मैंने टाइम को उस रूप में यूटिलाइज नहीं किया। तो आज का जो टाइम है, इस समय का भी टाइम, उसको आप भरपूर यूटिलाइज करिए। गुरु बैठे हैं हम लोग के डॉक्टर द्विवेदी सर, तो क्वेश्चंस भी उन्होंने पहले धमकी दे रखी है कि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे चीजें करेंगे। तो जैसा कि हमारे सीनियर सर ने अभी बोला, धीरज सर ने कि सरीन सर ने कि हम भी आपकी अच्छी से हैं, तो वो शिक्षक की जो भावना होनी चाहिए ना, वो आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए।
और जैसा कि मैंने कहा है कि जब भी आप लोगों के बीच में रहता हूं तो मैं ज्यादातर केस में इस मंच के भी माध्यम से इस टॉपिक्स कंसिडरिंग दिस टॉपिक्स मैं आप लोगों से वही बात करूंगा जो मैंने प्रैक्टिकल आपकी तरह रह करके जो मैंने सीखा है, या आज जो मैं चाहते हुए भी टाइम नहीं निकाल पाता कि उस सीट पे बैठ जाऊं, तो मैं आप सबसे अपने रियल फीलिंग को शेयर करूंगा अदर देन दिस टॉपिक्स। तो इंक्लूसिविटी इन्वॉल्व रहेगी, इंटीग्रिटी इन्वॉल्व रहेगी, और लास्ट एक बात मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहता हूं कि जैसा कि हमारे साथी स्पीकर ने कहा है, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आप ही फ्यूचर लीडर हो। लीडरशिप कहीं भी टॉट नहीं की जा सकती है, आपको लीडरशिप सिखाई जा सकती है। एडॉप्शन लेवल कितना है, फीडबैक अगर ले, लीडरशिप का कोई सेशन करा दिया जाए, एडॉप्शन लेवल कितना था, एग्जीक्यूशन लेवल कितना था, और फीडबैक क्या आया, और फीडबैक को भी अगर 360 डिग्री में अगर हम करें, 360 डिग्री में फीडबैक का क्या था स्कोर्स, तो मेजर नहीं किया जा सकता, बिकॉज आप सबके अंदर लीडरशिप है। कार बाहर खड़ी है, कार बाहर खड़ी है, वो अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, someone has to ignite that। चाबी लगाओगे तो स्टार्ट होगी। तो वो लीडरशिप ट्रेट आप सबके अंदर है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी है। जरूरत आप लोगों को क्या है, सिंपली इग्नाइट दैट, इग्नाइट को जगाओ, उसको जगाने का काम कोई फैकल्टी नहीं कर सकता, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं कर सकता, कोई भी स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोग कराते हैं, जानते हैं कहाँ पे क्या क्या चीजें फीडबैक आती है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में बताओ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, बिलो लेवल पे सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, उससे भी नीचे लेवल जो डिप्लोमा और इंजीनियर्स हैं उनके लिए अलग सेशन रखे जाते हैं, राइगोरस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मेंटरशिप का प्रोग्राम। लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने देखा है, अपना फील कर रहा हूँ, अपनी इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ, खास करके मैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखता हूँ, 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 50 के हैं, वो 5 एनर्जी का पावर प्लांट में देखता हूँ, जाके 4 के जो एस्पेक्ट और इम्पैक्ट रहते हैं, देखा है कि फीडबैक भी अलग रहता है। कहने का मतलब कि अपने अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी आपकी है उसको जगाना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 2 मिनट जैसे सरीन सर ने दिया था वैसे ही 2 मिनट फिर ले लूंगा। We'll have in the panel discussion. यस सर, 2 मिनट बस ले लूंगा सर। 2 मिनट टोटल था आपका, हो गया। फिर भी सर फिर लेगा। इस पूरे प्रोग्राम को जितना ज्यादा से ज्यादा होगा आप इंटरैक्टिव बताइएगा, बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। क्यों? जो पूछेंगे हम बताएंगे, क्योंकि मसाला इतना रहता है ना कि किसी भी चीज को इतना जल्दी इतना कम समय में परिभाषित करना, डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए आप लोग जितना क्वेश्चन हो सके, जितना ये जो टॉपिक्स आज का है, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके बना के हम लोगों से पूछिएगा। क्यों? कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लोगों को भी पता नहीं होंगे, फिर जाकर रीड करेंगे, गुरु बैठे हैं इनसे पूछ लेंगे, राघवेंद्र सर बैठे हैं उनसे टेक्निकल व्यू ले लेंगे उसका, उस क्वेश्चन का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you for very insightful. Actually, yesterday we had difficult leadership challenges between MLA and MP. दोनों का सुनना था तो his influence. So great, Patel, thank you. Give a loud applause to the Patel. Now we welcome Swati. Swati is every day you will see on Facebook. अभी 2 दिन पहले IIT दिल्ली में सेशन था, फिर IIM में थे। So thank you Swati for coming. Over to you and please give a loud applause to Swati. Good evening everyone. So आज इतने eminent leaders यहाँ बैठे हैं, मुझे यहाँ बैठा दिया है, मुझे बार-बार मन हो रहा है मैं इधर आ जाऊँ। I am really overwhelmed to be sitting here, but I am so grateful to SMS Lucknow. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to be here and share some time with everybody, with all the students, faculty, and the eminent leaders sitting here.
Dwivedi sir, like you all might have heard, I think that's one common name ever since I've joined the HR industry. That's one common name that I hear from, चाहे वो कोई 50 years old leader है, चाहे वो 20 साल का कोई है, हर कोई द्विवेदी सर को ही gratitude देता है. And अगर हम आज leadership की बात करें, तो I would say that this is the kind of leader that all of us should aspire to become. He is my role model, not only to be a wonderful leader, but a great human being. I mean, so many people singing praises. There ought to be something about it. So I think the live example of a great leader is here with us today. So अब आपको सबने तो difficult सवाल पूछने हैं, उससे पहले नई सवाल पूछ लेती हूँ. So I think I want to ask you all. You've already heard a lot about leadership. आप सब MBA students जो हैं, आप leadership तो it's a overrated word. So I want to hear from you. What does leadership mean to you? And you have to speak up. What do you mean by leadership? ऐसे ही जोर से हो तो yes. Give it to Ananda. Firstly, a big round of applause to her. Thank you, ma'am. According to me, a good leader is a person who is having an ability to get things done with the people, and along with that, not only being a leader to just guide them how the things needs to be done, but it's a kind of a group activity. A good leader is a person who himself work with the workers also. Very good. Great. Anybody else who would like to give an attempt? Yes. Good morning, ma'am. Good evening. Leadership means what with the people you have to motivate and make them at either substance goal you have to complete that. Great. Okay. So I would have waited for more people to speak, but since we have limited time, as much as leadership is about what we are saying about people motivating others, about where does leadership begin? Leadership begins from within us. Before you start thinking of a leader as somebody who can get work done from others and somebody who can inspire others, you have to learn to become your own leader. You got to learn to master your own five senses, right? You got to learn to master, the own compulsions and choices that you're making. So today in this session, we're going to talk. At least I will talk about leadership in a more inner leadership manner. Now, the three topics under leadership that we are talking about today: innovation. I think sir covered it very beautifully through a lot of examples. And I would also say that innovation now it's not a choice. It is something that we got to do because the pace at which things are changing, we cannot continue doing things that we were doing in the past. We have to do disruption. We have to start thinking differently. So it is great that this is something which is going to happen on its own, given the changes that are coming. If we talk about inclusivity, I think HR students here, you must have read about Maslow's hierarchy of needs. Have you read it? याद है किसी को? नहीं. All right. So Maslow's hierarchy of needs में भी आप देखोगे, तो there's a need of sense of belonging, right? And that need comes before the need of even the self-esteem and self-actualization. That is how important a human need it is to have a sense of belonging and inclusivity. And as a leader, it is your role that in the college, for example, it is the role of all your faculty members to make sure that children who are coming from different backgrounds, socio-economic background, different states, different culture, for everybody to feel inclusive and just say that I am SMS Lucknow student. That is the only identity that each student carries, right? That is the job of a leader, to make everybody feel inclusive. And you don't feel like start relating to your cultural, ethnicity, your background. यही काम है जो हमने कॉर्पोरेट में करना है. जो भी एम्प्लॉई हमारी कंपनी में काम करता है, he should
just think like मैं इस कंपनी का एम्प्लॉई हूँ और उसके लिए काम करता हूँ. Now there are, I'm sure the ladies are just going to touch upon the different inclusivity topics, but I want to give an example that I had heard about one organization where lemon tree में वो बोलते कि हम deaf and dumb employees को employ करेंगे. And when the head of HR made this decision, he just called for a meeting with his employees and said that let's be sensitive about these people we are going to hire. There was a lot of resistance in the people. And he could sense it and he said, क्या लग रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने बोला अरे वो डिफरेंट डाउन है, अभी वो काम करेंगे चाहे नहीं करेंगे, वो सिंपैथी रहेगा उनके प्रति, उनको कोई डांट नहीं लगाएगा, तो सारा प्रेशर हमारे ऊपर आ जाएगा क्योंकि उनको तो कोई डांटेगा नहीं. तो उन्होंने बोला कि आने देते हैं, करने देते हैं, फिर बात करेंगे 3-4 महीने बाद. And so these employees came in who were deaf and dumb, and after 3-4 months, it was he went back to them asking कि अच्छा कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है. तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक्चुअली लेट्स से अगर वो रूम क्लीनिंग स्टाफ में है, अगर उनको 10 कमरे क्लीन करने थे, उन्होंने 15 कमरे क्लीन कर दिए. उन्होंने अपने अलावा वो दूसरों को बोल रहे आपकी भी मैं 3-4 कर देता हूँ, because they are not taking tea breaks. उनको चाय पे गपशप नहीं मारनी है, सुट्टा ब्रेक नहीं लेना है. They were more productive than these people. और इनका fear कि हमारा इनका काम हमको करना पड़ेगा, the reverse happened. वो उनका काम मांग के कर रहे थे. So and then the head of HR there was able to establish कि हम लोगों को कोई भी नई चीज ट्राई करने में कितना resistance रहता है, लेकिन जब हम करते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है how much more we can achieve by having everybody, creating an inclusive environment where everybody can come and work. That's that. And integrity, I think a very important human value, not only for working professionals but as human beings. I think हमारा moral compass अगर हम integrity से हर चीज करते हैं तो कल को जब हम रिटायर हो रहे होंगे या जा रहे होंगे, तो जैसे रतन टाटा के बारे में सब बात कर रहे हैं वैसे ही हमारे बारे में भी बात होगी. So this is one value that I think we all should aspire to have and embrace. So that is it. Thank you very much. So friends, sense of pride, as Swati told, it's very important. You are the SMS employee, you are the SMS student. That's great sense of pride. So we need to learn from Lord Hanumanji. Wherever he introduced himself, he never told, well, I'm qualified and I'm Ashtanga Yoga teacher and I ate sun in the childhood. He never told. He only introduced Ram Doot, मैं माँ तुझा. वो चाहे रावण को इंट्रोडक्शन देना हो, चाहे माता सीता को, only he told, I am the Ram Doot. And that's the pride. His pride and his identity was only I am the Ram Doot. So that's the great sense of pride, each one of you, and that is the very important lesson of the leaders. So let's start the question round. And naturally, the first question will be with Misra ji. So Misra ji, how you feel in the light of Ratan Tata's again the bold and calculated risk-taking ability, such as acquisition of Jaguar and Land Rover? What method can leader employ to encourage innovative thinking while maintaining a balanced approach to the risk-taking? Misra ji. Well, I think सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि रतन टाटा जी उनके जैसे जो लेजेंड हुए, जो कि शायद सदियों में कुछ ही लोग होते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोल पाना, वो जो बोलते हैं ना, सूरज को दीपक दिखाना, उस जैसी बात हो जाएगी. लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट है, एक मुद्दा है, एक एग्जाम्पल है, उसको मद्देनजर रखते हुए we will discuss about that how exactly those things happen in corporate world. I'm sure most of you might have heard that story that Tata at that time, Tata Motors, and that's the organization where he was very deeply involved in day-to-day working. And when passenger cars came up, and in '98, Indica car was. I request students to please be seated. Don't keep moving here and there. Disturb. Please be at your place.
दरवाजा बार-बार मत खोलिए, जाइए, please be seated for some time. So in '98 when Indica was launched, and by the way, at that time I was working in Tata, and I also got in my first allotment Indica car, not through company's allotment, but as a general public lottery system allotment. And I still remember that there were somewhere close to 5 lakh advance booking, and out of 5 lakh in first lot, only 10,000 entitlement cards were released through lottery system. So I happened to be one. So anyway, at that point of time, within 1 year, there were a lot of problems, and then they were, of course, doing their best, and even cars were called back for a few days, and then whatever repairing had to be done, whatever defective parts had to be replaced, those things were done. And at that point of time, the story goes like this: that he happened to go to Ford in US, and said that perhaps they are unable to make it a world-class kind of thing. So perhaps it would be good if they can acquire that particular thing. Okay, I'm not privy to that story from corporate side, but what I have heard in social media, so that's the example what I'm taking. So from that point of view, perhaps there was certain rude comments, certain insulting comments that why did you at all start the car business? Why did you enter into this kind of business? And I think 10 years later, the rest is the history, that from Ford, that JLR was acquired by Tata. So I would say and share that particular learning, that it's only about risk taking, it's about envisioning the future. So that's what future is all about, that how exactly good quality people, good engineers India is producing in the last 10-20 years, and what will come up in future also. And that kind of pipeline will be there for talented people and a skilled workforce in India. And he felt confident, and that's how future was seen by him. And that's what the vision is all about, photograph of future, that how exactly India is going to shape up. And certainly that acquisition was done. There were many other acquisitions, okay. Even acquisition of Tetley is also a very famous example, that Tata Tea being a smaller player, and then they ended up acquiring that particular company. So it's all about innovative ideas, envisioning the future, and risk-taking ability as well. So risk-taking, I would say that nobody, no human being should be taking any kind of risk, but calculated risk, well analyzed, well understood, well thought over it, that okay, what if kind of scenario ये होगा तो हम क्या करेंगे, ये होगा तो हम क्या करेंगे, and then understanding कि हम पूरी तरह से prepared हैं या नहीं हैं उसके लिए, rather than taking the blind risk. So I think understanding that kind of situation, it's very important. And for any leader, people say that no decision can ever be analyzed 100% accurately. No decision. At the end of the thing, all the Excel files are there, all the financial numbers are there, analysis is there. So many aspects are there. It all can be analyzed to a deep level. But at the end of the day, decision is to be made based on your gut feel, based on your wisdom. That yes, लगता है ये decision हम ले सकते हैं और इसको successful कर सकते हैं. That's how visionaries take the decisions, and rest is the history. And that's how things happen. You can take any example, that how things shape up. So I think that's how I would summarize this particular point. Thank you, Mr. Ji. Information. आज के 10 साल पहले आपके हाथ में नोकिया मोबाइल हुआ करता, and we used to feel very proud कि हमारे पास नोकिया है. Today, how many of you have Nokia mobile? Any hand? So he is the only person. So that is the friend innovation. Nokia is no more. BSNL, Xerox, MTNL, Post Office, AT&T, ये सारी बड़ी कंपनी, big company, and they could not innovate. They could not change with the technology. They could not change with the market, and that's how they are in such a serious situation. So you
As a future leader, you as an organization must keep doing innovations, whatever is needed for the country and for your job, for your institution. McKinsey has done a survey, and survey says around 70% of the leaders says in my top 3 priorities, innovation is the first. 94% leaders says that innovation must be aligned with the culture and with the people if we want to grow. So my next question to my great friend Aditya again, what are some of the biggest challenges in preparing tomorrow's leader, especially with the fast change of the technology and the workforce dynamics? What are the key challenges to develop the leader with the technology and the workforce dynamics? Aditya. Thank you, Dr. There are a lot of challenges in preparing for tomorrow's leaders. The first challenge is that tomorrow is unpredictable with the speed of change today. And therefore, one of the most important capabilities that are required to be built in leaders of today and tomorrow is the ability to adapt to change. Hota kya hai that we get stuck to today, we get stuck to how is it happening, and we perhaps sometimes lose the ability to be adaptable to change. The rate at which change is happening today has never happened earlier. As we are sitting today, I'm sure there are some engineering IT students here. We are talking AI, ML, NLP, etc. But somewhere somebody is thinking new technology. And therefore, one of the challenges, Dr. is that how do you keep pace with change? Now, one is to wait and watch and take the last mover advantage because you will then be nearer to what is happening. The second is to build flexibility and ability to be able to adapt to change and say, okay, I'm here to let go, and what am I here to hold on? That is one. The second important aspect is that in today's workforce, and you asked me about workforce dynamics, we have a mix of 2-3 generations working together. In your own institution, I must tell you that I have seen at least 3 generations working right now. There's a very senior director technical who retired and has, is putting in so much of effort today, right to perhaps somebody who's a first year student who's Gen Z plus, not even Gen Z, it's Gen Z plus now. And imagine a workforce where you have somebody at the helm of affairs who's 79, 78, and somebody who's just about 20, maybe if you're a diploma engineer, 18. Look at the age gap. Now this age gap was existential earlier also, but today it is accelerated with the technology. And therefore, how do you work with such a wide spectrum of people? How do you connect emotional chords when people are perhaps having lesser span of attention, when people are having so much of uncertainty? And therefore, there again, Dr. I would say that the ability to influence, the ability to network, the ability to be able to adapt to how the other person wants you to be is very important. Today we have ministers in the government who are perhaps young, but the respective bureaucrats are old. Reverse, you have a minister who is old, you have a bureaucrat who is in the early 20s. How do they work? They work because they understand perspectives. अगर मैं आपकी बात सुनना चाहूँ और सुन के समझूँ, that's perhaps the biggest important aspect of SAR to be able to build future leaders. You also spoke about innovation. Trust me, the obsolescence curve has become shorter. आज चीज आती बाद में पुरानी कर जाती है. In the late 90s, 2000, Dr. You will, all of us who are in that age group will know, pagers came, and just in about 8 months, mobile phones came. Big Motorola 8700, big one. आप मारोगे तो लगे नीचे उससे, इतना बड़ा था. All the Nokia, and respect for those companies, they were very ahead in technology at that time. Now what do? Pager was a one-way communication. You have to get a message, you stop and park your car, and you get a PCO.
yellow board, and then mobile phones. He said, okay, why can't I make a two-way communication? The pages were out. Today, and again, this all my views, I just want to put on record out of personal capacity. I'm not trying to endorse any brand, any industry. I'm just here for personal capacity. But do you ever involve on having a cable TV connection in any of your houses? Get time into the premium product. Today, all the cars that you buy, right from a BMW to perhaps a Maruti, and all great respect for those cars, you don't go to an automobile accessory provider. Everything is fully loaded. What happened to the car accessory market? Earlier in the 90s, 2000s, you used to go and get your car fixed and all that stuff. So I'm trying to say that change is happening very fast. And therefore, if there are 3 or 4 important things I'd like to tell you, one is the ability to adapt to change, not be fixated कि ऐसे ही होता था और ऐसे ही होगा नहीं. ऐसे ही होता था, ऐसे भी हो सकता है. That's very important. Second is being willing to learn from all, no matter what age, hierarchy, economic background, because somebody somewhere is learning faster than you. And therefore the ability to learn, as we say, Swati, unlearn and relearn. Third, the ability to understand and work and network with people. Because wo time nahi raha hai aaj where you can work alone. You have to be an influencer, a collaborator, a networker. And last but not the least, sir, is that you have to now, and please mark my word, you have to now become more of a generalist and less of a specialist. Who is a specialist? A specialist is somebody who knows more and more about less and less. वो deep जाते हैं. A specialist is somebody who knows more and more about less and less. A generalist is somebody who knows less and less about more and more. So gone are the times when you can be a specialist, because that is changing so fast that अगर आप specialist बन गए तो आप वहीं रह जाएंगे. So you need to know multiple things, and multi-skilling, as they say. And therefore you would have seen also now science with economics, multiple ways of studying. हमारे time में either science or commerce or arts. But there are so many things that are intertwining, because the industry knows that you could be picked up for any skill. And therefore, you have to multi-skill. If you're a management student doing marketing in SMS, please start parallelly reading HR, general management, finance, data science, because something will come up soon. And therefore, the most important point is learn every time. Because those who are learning right now, and specifically those who are students here, you have to learn faster than the change. Otherwise, आप पीछे follow करेंगे. For leaders, you have to be more ahead of time. More on this as we speak. Thank you. Thank you, Aditya. Friends, you know, if you want to become leader, then certain things you know. What Dr. Kalam says, इसके पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे. If you don't dream big, you can't achieve anything. इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. So you just can't wait. You have to take lead, as Aditya told. You have to think ahead of time. You have to think more creatively and out of the box जो कभी किसी ने सोचा हो. If you really want to be in the competition. कलाम जी बोलते हैं तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तुम्हें जलना भी होगा. So without efforts, without persistence, without determination, you cannot achieve anything. My second question, Swati, you know nowadays the hybrid working from home, lot of things are happening after COVID. So Swati, what are the key strategies and HR policies can company adopt to keep team connected and motivated without personal interaction, particularly in the situation of remote working or hybrid working? How we get connected and how we can see that leadership quality remains. Swati. Thank you, sir. So now again we are coming to a topic which is like आजकल हम बहुत होते हैं artificial intelligence
AI, ML, now this generative AI, is it going to take away our jobs? Is it going to make a lot of us redundant? And now is the time when technology is going to make it possible for us to work remotely, but it is the human touch of a leader that is going to make him being able to get the team, keep the team motivated even when they're working remotely. And remote working is not only work from home. ऐसा नहीं है कि companies में hybrid है, आप घर से काम करिए. We are talking about global organizations. We are talking about you as a leader sitting in India and your two of your team members sitting in US, two of your team members sitting in London, two of your team members, everybody coming from a very different cultural background, from a very very different upbringing. So remote work from home भी है, remote work अलग-अलग culture के लोगों के साथ remotely काम करना भी है. In the past, like we have spoken about resistance to change, I remember before COVID, in my previous organization, we were trying to promote this policy of 1 day work from home in a week. And I remember a lot of resistance that we got from certain group of leaders saying, no, this will not work for us, this is not acceptable to our client, घर से लोग काम करेंगे कि नहीं, घर पे काम करने लग जाएंगे, focus नहीं करेंगे. Somewhere there was a trust issue with the leaders कि ये लोग पता नहीं घर से करेंगे कि नहीं, कम से कम ऑफिस में बैठते हैं, दिखता है. तो बहुत ज़्यादा resistance था. धीरे-धीरे हमने एक दिन तो फिर भी कर दिया कि आप एक दिन तो allow करिए. That happened and it was so timely कि उसके बाद ही कोविड आ गया. तो एटलीस्ट तब तक हमने सबको लैपटॉप दे दिए थे, वरना there were people who were working on desktops. अगर एकदम से कोविड आता तो लोगों के पास लैपटॉप भी नहीं था. हमने रिमोट वर्किंग एक दिन करने के चक्कर में पूरा वो फैसिलिटेट कर दिया था. और जब कोविड आ गया, देन सब लोग घर से काम कर रहे हैं, 5 दिन घर से काम कर रहे हैं, सब आराम से हो गया. So sometimes we have to really break these barriers to change and remote working. लेकिन हमें ये याद रखना है that it's always the human touch which is going to make that difference. I also want to, just now it's not related to this question, but I do want to make a mention, since the Vedi sir mentioned that I go to institutes like IITs and IIMs. But I must tell you that there's the warmth that I experienced in this institute, even when we were preparing to come here for the last 3 months. Srivastava sir was in touch, and there was a lot of communication which was happening in the WhatsApp group. There was a lot of interaction. I think I will remember this particular institute way better than a lot of other institutes where I've been just another this so I think we can never underestimate the value of human touch, and all of us should first aspire to become good human beings, and then leadership will follow. Thank you, Swati, for your kind words, and we keep watching you today. She is the chairperson of the around 150 company HR activities. So give a loud applause to her. So proud of her. All the IT companies, IBS company, more than 150 companies, she is now the chairman of the trustee. So that is the kind of achievement she got. Only see her performance, humility and passion. समस्याएं तो सबके लिए सेम होती, but how to deal with the issues are up to you. That shows your leadership. So बारिश के दौरान जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब बादलों के ऊपर उड़ जाता है. समस्याएं तो सबकी समान है, लेकिन आपका नजरिया उसको डील करने के लिए कैसा है, that depends on the बाज पक्षी ये बादल के ऊपर जा जाता है तो बारिश का कोई असर ही नहीं है. That is how you all have to live your life like a boss. You need to above the small things and make a dream big. Let me ask Tripathi, which is very important for all of you. Tripathi, what role do you think organization play in helping and developing the younger generation to build the leadership skills and inculcate a performance culture? Thank you, sir. If you have remember, when I starting में जब अपना introductory speech दे रहा था, I told you कि मैं जब भी ऐसे atmosphere में जाता हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता, खास करके स्टूडेंट लाइफ. आज फिर वही आया, बैठा यहाँ पे हूँ. डॉक्टर साहब ने
मुझसे वही स्टूडेंट और स्टूडेंट्स का और टीचर का क्या रहता है, दे टीच, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे टीच किया, उसके बाद फिर वही स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना। फिर मैं आज क्या कोइंसिडेंट है, मैं टीचर के रूप में सर है और स्टूडेंट के रूप में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ ना, तो हु इज द टीचर, हु इज द स्टूडेंट? बोलिए ना आप आज, मैं आपको चाहता हूँ कि आप इन्वॉल्व हो इस सेशन में। कौन सा? तो मैंने जो कहा था, इज इट ट्रूथ? प्लीज रेज योर हैंड। मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? सही बोला ना? बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन सर ने पूछा है। बेसिकली क्या है कि लीडरशिप जो आज का बहुत ही डिमांडिंग है। अगर हम लीडरशिप की बात करें, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस हैपेंड हियर वेयर समवन हैज शोन देयर लीडरशिप स्किल। अभी स्वाति ने एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से पूछा था ना कोई क्वेश्चंस, मैंने देखा कि मात्र ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स। उन्होंने शो कर दिया कि वो शी और ही कैन बिकम ए लीडर। वही लीडरशिप। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे सेशन करा करके कोई ऐसा मेरे पास जादुई या सबके पास कोई जादुई नहीं है कि वो आपको पैदा कर देगा लीडरशिप स्किल। आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, इग्नाइट करने की कोशिश करिए। मैं जब भी सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, हम लोग वी आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन आवर लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर उसको क्वांटिफाई कर दूं रुपए में, we are spending 52 lakhs on learning and development में। इंडिया स्टाफ जितने L&D के अपने वेंडर्स हैं, they all are associated with that। आप स्टार्ट कर लें अपग्रेड से चाहे स्टार्ट से, तो इतना खर्च करने के बाद we are spending our resources। सबसे बड़ा है टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम लोग को सबसे अधिक ध्यान रखना है। सर ने बोला कि कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं लीडरशिप को। इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको एग्जांपल सेट करके बताऊंगा हाउ वी आर वर्किंग टू शेप द न्यू बर्ड्स। मेरे यहाँ जीटी, डीटी और ग्रेजुएट्स हम लोग हायर करते हैं। मोस्टली वी हायर फ्रॉम द एनपीटीआई, नेशनल पावर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि हमें चाहिए ही होते हैं उनके ग्रेजुएट्स। बट इन सम एक्सटेंट जल्दी रहता है तो वी करेक्ट फ्रॉम अदर नियर बाय इंस्टीट्यूशंस से लेते हैं, उठा लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी किसी को शेप करना हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को हमें लीडरशिप स्किल अगर उसके डेवलप करना है, तो हमें मेंटरशिप का एडॉप्शन करना पड़ेगा। मेंटरशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको एक मेंटर क्रिएट करना पड़ेगा, हु इज बी योर मेंटर। इंटरेक्शन विद ऑल द क्रॉस फंक्शनल टीम्स, उनसे इंटरेक्ट कराना पड़ेगा आपका। और मोर इम्पोर्टेंट, कहीं भी अगर आप शेप कर रहे हो लीडरशिप को, परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंटरशिप प्रोग्राम, सेकेंडरी आपका फोस्टरिंग क्रॉस डिपार्टमेंट इंटरेक्शन, एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर। आप बता सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर का कितना सेट एग्जांपल अनन्या ने पेश किया था while he was just started this session, introduction दे रही थी। अनन्या नाम था, जब started this session, वो लीडरशिप है, वो परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर होना चाहिए कि अनन्या मैं फॉर्मवा मैं भी तो कर सकता हूँ, कोई भी आदमी। वो कल्चर, वो सेंस ऑफ लर्निंग आपके अंदर होना चाहिए। जैसे सर ने बोला, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात हो रही है, सबसे प्रायोरिटी है आपको तो वो देना ही है यार। मुझे सीखने की विलिंगनेस टू लर्न अगर मेरे अंदर नहीं है, हाउ यू कैन डेवलप योरसेल्फ। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, अभी ये सेशन है और ऑर्गेनाइज किया गया है। इस टोटल सेशन में बैठना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इफ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और आपको किसी पार्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए अगर आपका नाम चला गया है डिपार्टमेंटल एचओडी द्वारा,
डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं ना, कौन सी ट्रेनिंग किसको दी जाएगी, उसकी मैपिंग है, PMS साइकिल है. We develop through so many exercises, we have adoption of so many measures for rating the performance. तो वो जो performance driven culture का सबसे बड़ा एग्जांपल है. इसके पहले जो भी मेंटर रहा होगा अनन्या को, why his name has been chosen? Because he has performed. परफॉर्मेंस की बेसिस पे हुआ होगा ना अनन्या, और सारे लोग भी दिए. तो परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर आपको डेवलप करना होगा, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंस्टीट्यूशन. So thank you, sir. Pramod ji, I want to just add on that. इस रूम में बहुत सारी ऐसी अनन्या बैठी होंगी या बैठे होंगे जो परफॉर्म करने से डर रहे होंगे, टैलेंट होगा उनके अंदर. My call to all of those is that please volunteer. Reach out to your faculty and show कि मुझ में भी वो ability है. You're good. The other two are also good. But where are the others? Because today everything is performance. आपके मन में क्या बात नहीं कर रहेगा, आपके स्टेज पे क्या वो करेगा. And therefore I would encourage that if you want to be a future leader, must just 10 seconds, please look at performance opportunities, grab them. मिलने की वेट मत करिएगा, मिलने में जिंदगी निकल जाती है. How do you stand up and say, I want to be the anchor of this program, can I get 5 minutes or 5 second slot? Otherwise, in a class of 300, 200, 150, how will you get noticed? You will get noticed with performance and you will have to show potential for that. All the batch holders who have batches, I've been seeing a lot of people having batches, vice president, etc., etc. Perhaps they have been handpicked because they have either shown, demonstrated some ability or have reached out. So my request is, if you want to be a future leader, first and foremost, Dr. you will, I'm sure, agree with this, please start raising your hand and saying, I want to give it a try. डरिए मत. Maximum क्या होगा? You will not do well. Doesn't matter. Next time and the next time. But if you don't try, जो भी चीज आपने try नहीं करी है, वो आप already मन में हार चुके हैं. क्योंकि ना तो ना है, हाँ करके देखिए, क्या पता उस तरफ आपका जो है काफी अच्छा समय हो. Thank you, Dr. Friends, you need to, as Patil jo told and Aditya told, you need to really be perform. Yesterday I was taking class. It was for 1.5 hours. It went to 3 hours. 537 students, and they were not allowing me to speak. They were asking so many questions. So it is all how you speak. In 1 minute, I got almost 200 responses from the students, and that's how SMS must be known for this. Each one of you must speak, be proactive, and don't fear. There is nothing called right or wrong. There is nothing called अभी बोलूं कि नहीं बोलूं. एक सवाल पूछा जाए 50 लोग खड़े हो जाए. That is how you will make your. This is the forum. This is something called IRT in psychology. It is called initial reaction time. हमने आपसे सवाल पूछा, आपने कितने सेकंड में रिस्पांस किया, that decides your future. So that is the kind of friends you must ensure. Prompt response, don't worry for anything. So my second question is, so let's go to Mishra ji again. Mishra ji, how an organization put special focus on ethics and integrity in leadership? How can a company ensure that values remain central to the decision-making process even in challenging times? Well, I think it's very important question, and as far as ethics and values are concerned, I would say that's the foundation of any organization. So it has to be understood very clearly that what exactly organizations live for, what are they known for. So from that point of view, as we say quite popularly, vision, mission, values. So there is a vision for the organization that what exactly you would like
to be after 5 years, 10 years, 20 years in time to come. And mission, as quite often we say, is the chariot, रथ जो बोलते हैं हम हिंदी में, उस विजन के लिए. That's how exactly you are going to implement and fructify that particular vision which you have chronicled, that you will be like this, what we call it photograph of future as well. So how exactly you will implement. Now, in order to achieve that particular vision, that organizational success and sustainable success and profitable success, whatever, it could be profit, size of the organization, it could be number of business, there could be many aspects of business which can be chalked out for the vision that in 5 years and 10 years time, this is what we will be. So values and ethics are very important from that point of view, that what exactly you are living for, what are you known for. So in any corporate, those values which are imbibed by everyone, embedded in the organization structure from top to bottom, it's a code of conduct, it's a behavior which is bound and everybody is supposed to, expected to adhere. So those are communicated also very clearly. So it has to be well understood, and so that there is no compromise. Even you might be remembering, Adit was sharing in his opening remark as well, that as far as integrity is concerned, very simple definition, that आप क्या करते हो जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, आप क्या करते हो? So that's the integrity. Nobody is watching you. So the corporate philosophy is that don't expect anyone to watch you. You are into your job. You know what you are supposed to be doing. Keep doing your best and keep performing the best year on year, day after day. And that's how things will evolve. So from that point of view, values have to be well established, then well communicated across breadth and depth of the organization, so that those are all well understood in its meaning and its purpose and its complete clarity, so that it's all done there. Now another point, what Dr. Dwivedi has asked, that what exactly you do to establish or to institutionalize it, or what kind of challenges we can face in order to have these kind of values and integrity in our organization. Many organizations I have seen, and many places where I have worked also, that there could be certain awards for living these values. Okay? There could be certain great examples for that. That so and so particular person, if you have 5 to 10 values well documented in your organization, and somebody is living those values and going beyond his duty, all of his duty, and then setting some excellent example, which can be a role model example, and which can be implemented and followed up by many others also, then those kind of certain awards can be distributed during annual day or during certain quarterly events, those kind of things, so that those are well understood by everyone and communicated. So I think that's one mechanism of communication, because employee communication in any organization is very important tool and mechanism to inform everyone, and so that people come to know what can be done and what cannot be done. Okay, and then when each kind of examples are communicated and people are recognized for their superb efforts, then many others can also follow and emulate those examples and can make things happen. And that's how organization move from good to great kind of thing, and that particular journey can keep happening. Because every organization, as we say that innovation is the topic, every organization has to keep moving and keep moving in that particular journey. Because if you are left behind, then you are left behind. If you are static, सब लोग आगे चले जाएंगे. तो इसके लिए आपको भी आगे बढ़ना है. You have to keep improving yourself in all the dimensions of your organizational performance parameters, and then only you can sustain and you can build and keep moving forward in your sustainable and successful journey. Thank you, Mr. Thank you.
Friends, you know, महान अलेक्जेंडर का नाम आपको सुना होगा. Great thinker. He says, मुझे उन सिंहों की सेना से डर नहीं लगता जिसे कोई भेड़िया लीड कर रहा हो, बट मुझे उन भेड़ियों की सेना से ज्यादा डर लगता है जिसे कोई सिंह चला. So it all matters who is the leader. I got considered Prime Minister till he has 41 MPs and balanced with Congress. तो किसी ने पूछा कि आप तो आपके पास तो लोग हैं नहीं, you are in the bus, how you will lead? He told it all depends who is on the driver's seat. So I don't care how many numbers we have, and I will lead them. So this is what it matters, friends. When the Norman, Mr. Norman, who is a philosopher, he says, leadership is a potent combination of strategy and character. But if you have to choose one, then lead the strategy. It is only the. So it is people which matters. But now I will go to Swati and ask the, you are now working with a 140 years old corporate group. 140 साल पुरानी कंपनी के साथ आप काम कर रही हो और इसके पहले आप 42 years old global MNC में थी. Swati, what are the cultural difference you have observed between these two companies and particularly focused to inclusivity and the diversity? While sir has mentioned the difference in the years of existence of the two organizations, but I think और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों को बहुत different बनाती हैं. The previous organization that I worked with was an Israeli company, and this one is a Switzerland-based company. Now Israel, as a nation, is always in the fighting mode. They are always, surrounded by, they're always in a war-ready state. And Switzerland, on the other hand, is a very peaceful country. I don't think they've seen many wars. So there are certain, traits that those people, the leadership there would naturally have, and there's a certain response to things. So then my previous organization, like Dwedi sir rightly mentioned, was a 42-year-old young organization. The average age group of people working in that company was 25, 26. We had a lot of people, fresh graduates, and it was a bottom-heavy organization. And here, the average age group would be about 44, 45, because people have been with the organization for many, many years. When I was leaving my previous organization, we were having our 42-year-old celebration. It was grand. For 2 months on social media, every day, our employees would be posting stuff and what great stuff we are doing. And last month, we completed 140 years in this organization, and we had a very small celebration in a very, very humble way. It was really a cultural shift for me when I came from that organization, where we had to put everything on LinkedIn, everything on social media. Everybody was, very excited about it. And here it is more, people are like, it's okay, It is our values which matter to us most. Now, there are 4 values in this organization that every employee lives by. I went and I came from an IT company, and this was a manufacturing company. For the first time, I was getting into manufacturing space. From whatever little experience, I was not sure how manufacturing will be. But I must tell you that what I have experienced in terms of when I go to the factories. The other day, last month, I was in a factory, Kavitapuram near Coimbatore, and there was this employee. On everybody's desk during lunchtime, I saw उन्होंने एक पत्ते वो केले के पत्ते में बिरयानी डाल के सबके टेबल पे पड़ा हुआ है. तो मैंने बोला कि ये मतलब ऑफिस की तरह हम दे रहे हैं. उन्होंने कहा नहीं, ये एम्प्लॉई लेके आए हैं और सारे लोगों के लिए फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर एज वेल एज दिस. और तब मैंने सोचा कि पता नहीं लास्ट टाइम हमने किसी को इतने सारे ऑफिस में लोगों को खाना कभी खिलाया होगा. एंड व्हेन आई से हमने नॉट ओनली इंडिविजुअली बट इवन एज एन ऑर्गेनाइजेशन. And then I remembered जब मैं ये रोल ले रही थी, जो मेरे से पहले थे, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग क्या नहीं है, क्या स्किल्स सीखूं, क्या करके आऊं. उन्होंने कहा स्वाति कुछ नहीं है, अच्छा अच्छे इंसान बन के आओ, जो सबको जो सही है अपने लोगों के लिए वो करो. And that is all you require to be successful in this role. And I think that is what I have seen happening in this organization. And I think this is the reason it has sustained itself for so many years. In terms of value, if I can say, it is
4 values that they stand by. One is humility. I think every person, modesty is a very important value for us. Every person, right from the top leadership to the youngest employee, this is one quality we look at. When I went for the interview, our president for South Asia, he actually escorted me back to the door when I was going back, and I was like, wow, this is the culture in this organization. So modesty, very important. Perseverance, where you have to fight, which everybody is saying that no matter how difficult things become, you got to push yourself and you got to keep trying and persevere. So, these are the values which has made this organization sustain and survive for so many years, and I'm sure for many more years to go. Over 100 years they sustain. I was dealing one of the Fortune 1 company. Fortune 1 company, you all know the name. And their values are so strong. When I offered the Tulsi plant as a gift to the head of the center, he refused to take the Tulsi plant. It was in our values and code of conduct. I cannot accept any gift from you, even the Tulsi plant. I told, give me the money. It is 20 rupees. He told, no, I cannot give you money also. He cannot take the lunch or dinner with you. That is the against. Forget about the gifts. So, some of the companies, those who stand on the great values and ethics, they keep on going for years and years and hundreds. I do so many merger and acquisitions. If you see the top 30 companies, and next edition, 15 will be no more. So that is how some of the now live speakers I want to ask from all these people. Tripathi ji, can you share a very specific case study in your own company as a general manager HR, where you had to manage a serious issue related to behavior and attitude of a senior leader, and how it has impacted the organization and how you resolve that issue related to attitude and behavior of a senior leader? Thank you, sir, for designated me as a student. फिर सर ने क्वेश्चन मुझसे पूछ ही दिया, बताना भी पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में hiring to separation from welfare to development सब कुछ करना पड़ता है चार वाले को। इंसिडेंट होते रहते हैं वहां भी, जैसे कॉलेज में अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया, प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट होगी, प्रिंसिपल विल इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड अकॉर्डिंगली पनिश यू। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। होता क्या है, सीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं। स्टार्टिंग लेवल जिसको जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट जिसको एसएम बोलते हैं। तो मैं एग्जांपल तो बहुत सारे हैं सर, बिकॉज़ आई एम हैविंग 27 ईयर एक्सपीरियंस, बट हम एक्स5 के रूप में आपको एग्जांपल देते हैं। एक कंपनी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं उसका पार्ट था, अभी नहीं हूं उस कंपनी का। आई वोंट साइट दैट कंपनी नेम। उस कंपनी के बहुत ही सीनियर थे, बहुत लर्निंग एक्सपोजर था उनका। वी ट्राइड टू बिल्ड दिस फॉर द कंपनी, और उनके पास जो फाइनेंशियल पावर थी, अथॉरिटी थी, वो मेरे ख्याल से एमडी और सीईओ, अगर he has recommended something, whether it is for defining the CTC of a new entrant or for a performance appraisal for a juniors, mid-term appraisals किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। मिड टर्म में कोई अप्रेजल होता है, बट नो कंपनसेशन, कोई इसका आपके सैलरी में पार्ट नहीं लगता। मिड टर्म में क्वार्टरली अप्रेजल होता है, हाफ ईयरली होता है, एंड ईयरली तो होता ही है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्होंने मिड टर्म में अप्रेजल भी करा, और कुछ भी उन्होंने लिख दिया, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, बट कोई मेल नहीं,
एचआर को कुछ भी नहीं, सिंपल अगर जैसे हम लोग एसएमएस में हैं सर, और सपोज दैट समवन गाइस हैज इंटरेक्टेड, उनको पसंद आ गया कि यार इंडिया फाइनेंस का लड़का है, टैलेंटेड है, उठा सकते हैं इसको ट्रेडिस में, डालते हैं ट्रेडिस में इसको। प्रिंसिपल सर से बात करके वो उसको यहीं पे बैठ के जैसे पेपर वगैरह है यहीं से अपॉइंट दे देते थे, ये लेके आ जाना बेटा एचआर वाले से मिल लेना, उनके साथ में जो है वो एचआर वाले को दे देता। बहुत बिग नेम था उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका। तो लेकिन उनका एक ड्रॉबैक था, चूंकि ही इज ड्राइविंग द बिजनेस फॉर द कंपनी, उनको मालिक तक कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि बिजनेस ला रहा था बंदा। लेकिन उनके बिहेव तो थे, किसी को भी चाहा तो नीचे से ऊपर उठा दिया, गुस्सा आया तो उसको ऊपर से नीचे बैठा दिया। ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता है ना सर। कंपनी रन बाय द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, एक इंटरवेंशन से नहीं चलती कंपनी। उन्होंने किसी को ऐसे उठाया, बात कर रहा था, it was the delivering the presentation, और प्रेजेंटेशन में छोटी सी उससे कुछ मिस्टेक हो गई, मिस्टेक्स हो गई, फाइनेंशियल मिस्टेक थी और एक्सेल शीट की मिस्टेक थी, हो सकता है किसी से भी हो सकता है। फार्मूला करते हैं, ड्रॉप एंड डाउन करते हैं, बस कोई भी एक्सेल फार्मूला। उसकी एक छोटी सी गलती के लिए उन्होंने उसको एग्जैक्टली बोला, वर्बल बोला, एंड व्हेन ही सिट इन देयर ऑफिस ही जस्ट रोट डाउन टू ग्रुप एचआर हेड। ग्रुप एचआर हेड को उन्होंने लिख दिया, पनिशमेंट हो गया उसको, उस बंदे को। अगेन दिस काइंड ऑफ हैपनिंग डन बाय हिम, दूसरी बार भी उन्होंने कर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर एक तीसरा हुआ, इंसिडेंट अलग अलग थे। मैनेजमेंट को कॉल हुआ, जो ग्रुप एचआर हेड थे, he was new, he was ONGC VRS employee, ONGC के रिटायर्ड थे वो, VRS थे, not retired। उन्होंने किसी तरीके से in between the management has changed, एक मालिक के ही जो सेकंड सन थे उन्हें ही टेक ओवर द चार्ज। ग्रुप एचआर हेड ने उनको कम्युनिकेट कर दिया कि सर ये तीसरा इंसिडेंट है और जब सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, it drove a message to all। तुरंत ही उन्होंने ग्रुप एचआर हेड को बोला, राइट डाउन ए लेटर टू आवर टॉप मैनेजमेंट लेवल, SM2 लेवल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उस समय था। कॉल किया उन्होंने, उन सबको बुलाओ, they have interacted with all in presence of that senior people, और उन्होंने कहा कि सबका यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करो, एवरीवन हैज टू अटेंड दैट प्रोग्राम, और सबको अटेंड करना है, और उसको आपको विद इन 45 डेज उसको प्रोग्राम का फीडबैक भी देना है, कंडक्शन से लेकर के एक्सक्यूशन तक, एंड फीडबैक 45 डेज में सबके फीडबैक ले लें। उस फीडबैक में इंटरेक्शन भी था, 1-to-1 इंटरेक्शन भी करना एचआर को। फीडबैक में आया, उनको कुछ पता नहीं था, उनको लगा कि जैसे बहुत सारे मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उस तरह का ही प्रोग्राम बना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें उस उतने बड़े सीनियर्स को मैनेजमेंट द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कैसे उनको हमको ट्रैक करना है, और सबसे लिखा गया कि अगर ऐसा इंसिडेंट होगा तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया होगा बिफोर एम्प्लॉयमेंट। जब इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू के पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। आप लोग जानते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में? हाँ, दिया है किसी ने? आपने दिया है? उसमें कोई गलत सही नहीं होता है क्वेश्चन, वो जिस प्रोफाइल के लिए आप एप्लीकेंट हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, कोई यस या नो, कोई गलत नहीं होता। उससे मैपिंग होती है आपके ब्रेन की, आपके विजन की, कितना आपके अंदर वो एक्सेलरेशन है। वैसे ही उनका टेस्ट किया गया, लॉन्च करा, और लास्टली उनके लिए ही एमडी ने उनको बुला के कहा कि सर यू हैव टू अटेंड ए प्रोग्राम एट एमडीआई गुड़गांव, और राइगोरस उनको एमडीआई गुड़गांव भेजा गया। एमडीआई में उन्होंने अपना लर्निंग करी, लौट के आए, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन चेंज था। तो जैसा कि क्वेश्चन है सर का कि कैसे शेपिंग करते हैं इन सब चीजों को, मैं देख रहा हूं कि पीछे भी जो लोग बैठे हैं बहुत ज्यादा फ्रीडम में, क्यों? इसीलिए सेशन को इंटरैक्टिव होना चाहिए, है ना?
बोलिए आप लोग। यस, तो कुल मिलाकर के ये है कि किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में छूट नहीं है, अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं है, टॉप टू बॉटम तक। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसा कि सर ने बोला, हमारे यहाँ एक बड़ी होती है टाउन हॉल मीटिंग, जैसे हम लोग बैठते हैं ऐसे ही हमारे कंपनी के MD, CEO, CFO सारे लोग बैठते हैं, और बी एम्प्लॉई ऐसे ही हायरार्किकल लेवल में बैठा जाता है। SM पहले टॉप मैनेजमेंट यहाँ बैठता है, SM इस तरीके से बैठते हैं, और एरिया ऑफ कंसर्न वहाँ पे रेज किया जाता है। वहाँ पे आपको फ्रीडम रहता है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। इवन जो एम्प्लॉई की साइकोलॉजी होती है कि MD साहब बैठे हैं, आज रेज कर दो कि सर मेरे ख्याल से हर जो बैचलर्स रूम है सब में टीवी होनी चाहिए, टीवी दे रखा है सर, उसमें उसका रिचार्ज कंपनी की तरफ से होना चाहिए। तो एरिया ऑफ कंसर्न ऐसे टॉप मैनेजमेंट के पास देने का एक मौका रहता है, तो उसमें भी आपको ये मौका रहता है चीजों को समझने का और करने का। थैंक यू सर। Thank you Tiwari. So let's move to another quick last few questions only on the live examples. Let's go to Aditya ji. Aditya ji, please share any specific example from your Tata Group where you have set an example in relation to corporate governance, ethics and values for the leadership team and the employees. Dr. Vedi, I'm not authorized to speak on the Tata Group. I'm not a spokesperson of Tata Power, but I will go to one of my previous organizations. You have to excuse me for that because I'm governed by code of conduct. So yes, thank you. But I will definitely share some insights on code of conduct and ethical acts. And you understand, you've been a senior professional. I am not going to name the company, but I'm just going to share with you how HR plays a role in setting up the code of conduct and demonstrating by living the code of conduct. काफी जगह क्या होता है that people are recommended by the management. You know, when people are at senior levels, there is some CVs that come to you that देख लीजिए, recommend कर लीजिए, etc. And sometimes as HR, you are in the pressure that what do I tell? This is coming from the top leadership, right? And उसमें remark होता है, please see, please discuss. Now, one way, the easier way is that you exactly do what the leader is telling you to do and don't apply your mind. That means you make a VIP entry and place the person there. But I was talking on breakfast, in fact, lunch in the afternoon, that if you have a spinal cord that is given to you for two reasons. One, to keep it straight when it's in integrity, and one, to make it flexible when you're wrong. दो ही कारण है, तीसरा कारण नहीं है. When you have to keep it straight is when you are actually correct. And you have to bend it and say sorry when you're wrong. Now, if you are correct, there are again two ways to represent. One is the way of managing and saying, you know what, I can do this, आप जैसा कह रहे हैं, but ये ethically थोड़ा it will be set a wrong precedence. The second is कि मैं नहीं कर सकता. So maturity says that you have to use your tact and give back and say that how can I manage it because this will set a precedent. So एक case हुआ था कुछ आज से काफी साल पहले where somebody who was not having the right kind of documents was asked to be hired. Now at that time I was middle management and I asked my boss, I said, what do I do? It is being sent to me, it's not being sent to you. And he said that you do as if you are in my chair. You do as if you are in my chair. So I made a beautiful representation. I met the then leadership. I said that these are the facts on the table. This is my recommendation of what should be done and what should not be done. These are the benefits and perhaps the issues that can come in. I want to present, and if you can give me some 2-3 minutes of time, you won't believe that the leader actually spent time, understood, and said, you're absolutely right. In fact, get me all such cases of the past that perhaps have gone unnoticed. So कभी-कभी क्या होता है आपको देखिए that if you don't speak up, कि कुछ ऐसा है where you need to bring it up to the attention, then it doesn't happen. Secondly, sometimes there is a misrepresentation. Somebody takes somebody's name and said ये वहाँ से आया है. वहाँ से actually आया नहीं होता है. वो आया किसी conduit से होता है. So I'm all trying to say that I think it came up in the earlier discussion. You have to walk the talk. अगर आप सही हैं तो आप सही हैं. Short term में शायद आपको नुकसान होगा,
लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा, आप लिख के ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप गलत हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म में फायदा हो जाए, तो शॉर्ट टर्म में फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। अब चॉइस आपकी है कि आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में गेम खेलना है। दैट सेड, कभी-कभी प्रेशर सिचुएशन होते हैं। The only thing that I will always say is that will I do it if I were at the apex? Will I do it if this was my own family? Will I do it if this is my own company? अक्सर हम लोग सोचते हैं, it's not my company, it's somebody else. No, it's not. It's your company. हम लोग there is a beautiful word called CTC. सुना है आपने CTC? क्या होता है CTC? जोर से बोलिए। करेक्ट। CTC का एक और मतलब होता है, वो बताइए। स्वाति सवाल पूछती है, आप जवाब देते हैं, मैं पूछता हूँ, नहीं देते हैं। It's commitment to company. आप लोग CTC बोलते हैं, commitment to company क्या है आपका? Everybody sitting in this room has to understand there is something called commitment to company or commitment to corporation. When you are in SMS Lucknow, how committed are you to SMS Lucknow? When you are in the panel, how committed are you to the panel? When you are in an organization, how committed are you to it? Cost तो ले लिया आपने, whatever is your package. Return में क्या दिया commitment आपने? सिर्फ शरद जी का तो नहीं है SMS Lucknow, आप सबका है कि नहीं? मुझे लगता है हाइट ही नहीं चाहिए आपको। So you have to think like entrepreneurs to be able to realize his vision. So my only two bits are that please do the right thing, and if you are unable to do the right thing, and if you are in a dilemma कि मैं क्या करूं, because ethical conduct, code of conduct is just a fine line. You can be swayed by the momentary benefits. Please seek help from people and try to speak up. Speak up respectfully. There are very many cases I can share, but I think we will refrain from specifics. I only want to tell you that whenever you feel something is wrong, have the courage, the guts to professionally speak up and say, I want to raise a point, make a point, and then leave it to management. And they're all senior people, they know how to do it. I will have to excuse the specifics because of reasons of confidentiality. Thank you. Thank you so much. Now, friends, as in the beginning I told all of you have to ask questions. So whosoever has made the specific notes to ask questions, now it is open for the question and answers. Please go ahead and ask question. Introduce yourself, tell your name and ask your question. And to whom if you want to ask any particular person or to yes, please. देखिए, बड़ा सिंपल सा एक कोड ऑफ कंडक्ट में लेख कर देता हूँ डॉक्टर साहब के बिहाफ पे। I've done lot of panels. अगर आप नहीं पूछेंगे, हम नीचे आ जाएंगे। और अगर हम नीचे आ गए, लखनऊ में ऐसी बात नहीं है, तो माइक सामने करके we'll put you and what is called cold calling, which means we'll call out and say, excuse me, the man in the brown shirt, what's your question? अब आप देख लीजिए, मेरे से बचना है या अपने आप से पूछना है? डॉक्टर साहब, it's okay with you? Yes, yes. So we need at least 10 questions from this room. 10 questions, forget right or wrong. The question is always right. The answer can be wrong. On that note, 10 questions से कम हम यहाँ से जाएंगे नहीं, 11वां आपको फ्री में मिलेगा. Go ahead. Somebody can move the mic, please. Yes, please. Good evening, sir. My name is Anmeha Mishra and I'm pursuing MBA. I want to know this, what are the skills needed for the job? Want to ask me? Yes, sir. Oh, that's so nice. What are the skills needed for the job? Which job? In any sector, for related to MBA only. Okay, so what are the skills to be more employable, right? Yes, sir. So that you can get a job. Yes, sir. Generally, I will toss the question back to you, what I am prompted to answer. There is no magic formula, first of all, for landing up into a job. There are a couple of things that we have learned by experience. First of all, since you are all freshers, you will be coming from campus, you should be a subject matter expert. Which means if you are from which stream are you from, ma'am? First semester student. First semester, with the time hai. But let's assume you do finance. Let's assume you have finance as specialty. Yeah, I want to. Yeah, then you have to know everything about finance that is taught to you because you are in campus only to study, primarily.
And therefore, the first thing that I hire from campus, at Tata Power only in the last 5-7 cycles, we've hired more than 4,000 youngsters from campuses, right from diploma engineers to MTechs from some of the best institutions like yourselves. So first and foremost, you have to know your subject, right? Because we will check for you on your functional expertise. That's very important. Second, you need to also know more than your subject. It means people like me and others in this panel will ask you about your interests. How have you upskilled? What are the various things that you've learned? Your internships, your work, your work experience. Third is your attitude. You have to show positivity. When you are talking, it should emanate positivity. आपकी बात से positivity आनी चाहिए. Fourth, every interview is different. Every interviewer is different. There is no straight-jacket approach. It's customized. It's not a universal fit. Which means, have you researched the company? Have you researched about the panel? What is the company and the industry doing? Always be ready for some questions on your side also and say, I read about your annual report. I find that you are doing this. Can I get you a little more? People will say, oh my God, this wonderful woman or this man knows more about the company. Next question. Even directors are currently sir कि why question only students आप teacher से क्यों नहीं पूछते? तो उसके लिए भी कुछ है हमारे पास. So next question please. Yes, introduce yourself and ask question. Yes, please ask. Good evening, everyone. My name is Nikita. Sir, my question is to you. What were the challenges that you have faced during your initial days of your career, and how did you overcome from it? The navigator is here. You have to look at him. He is the junction. He can divert the traffic. So if you want to hear me, you have to take my name and say, "Mujhe Aditya sir se hi sunna hai." Moral lecture to Anyone? Yes. Ati, go ahead. I have faced a lot of challenges. Lamba ho gaya. So I think the list of challenges is huge for me as well. But I think I can say more from the gender perspective since I am representing another gender here. I think there are certain. So all of these volunteering work when I've been doing, in manufacturing, you said I'm a mentor, I'm a coach, I'm trustee for one organization. A lot of times when I had to go out with my male colleagues and we had to meet the sponsor at night, or we are meeting up, for our next event if we are preparing, there were times when my people would ask me, but who's taking care of your child that you're sitting here? And I would be my spouse, same like yours. So a lot of times, and because you are a girl, I'm saying that there are challenges in all our lives as professionals, and as we grow there a lot. But then there's a lot more that will come your way. I have, when I had, my daughter was 8 months old, I got an opportunity to go to Israel for one executive coaching program, which I was preparing for a very long time. And then it was a very important dilemma, whether should I go for it or, my daughter is still small. But thankfully I had a supportive family. I made the choice, for which again, there were certain, comments, there were certain thoughts that were coming from around. I relocated, I took a job when I was in Pune and my family was in Pune. I got an offer from BCG, Boston Consulting Group, which was my dream company. So I made a choice to relocate. And then I said my husband will find something eventually there. And that time again, I'm again sharing, my daughter was small, I went there. Not only the people in my organization were surprised that I'm taking this call of relocating while my family is here, but even in BCG, people were asking me, really? You switched your job while your family is still there. So for women in particular, if you're putting your career ahead of your family, a lot of time it is frowned upon. But that's okay, so long as you are doing a justice, your family is happy, you know that you are taking good care of them, you can ignore the noise and you can go ahead. Besides that, I think as much as we are saying that you must learn more skills, you must go out of your comfort zone. I think a lot of times when I tried to do it, there was some criticism that came that if you're in a particular profile, let's say I'm doing compensation and benefits, that's my core role.
but I'm going and doing trainings because that's something I'm passionate about and I want to learn, then people would say, अरे लगता है CFP का काम ज़्यादा नहीं है, training वगैरह के लिए बहुत time है. So, or things like that. So, so long as you have the conviction that what you are doing is the right thing, there are a lot of challenges which are going to come from the family side, from the professional side. But I think if you have the conviction and you know that this is what you want to do, you have to go ahead and pursue it. Some points to add, Dr. Dwivedi, with your permission. First of all, congratulations to you for asking such a brilliant question. So, during initial career stage or even at career stage also, please remember one thing, that there is no free lunch anywhere. Okay. I hope everyone understands the real meaning of this. So, the point is that every one of us will come across certain challenges every now and then. It's only our own determination, our own passion, our excitement, our mindset, no matter how difficult situation is, okay, die-hard attitude, fire in the belly, so many attributes will come within you which will make you successful and which you will be able to do it. Okay, I would like to share one example with all of you. Just before I come to example, one more point I would share, that whenever you are doing some work, you are on job, role, don't have that entitlement feeling also. I am entitled for this. ठीक है, ये पोजीशन मिल गई. पाटिल जी एक एग्जांपल दे रहे थे, बहुत बड़े साहब थे, इतना बड़ा पावर था, एमडी भी कुछ नहीं बोल सकते थे. So it's if you ask my personal view on that story, I would say it was an unfortunate situation. So but the point is, entitlement की feeling मत रखिए कि हम इस पोजीशन में हैं, ये है, so I am entitled to do this. There are certain code of conduct, certain values, certain systems, certain boundary within which you have to operate. Be a disciplined soldier and work according to that, rather than having that entitlement feeling कि नहीं हम तो हैं तो हम तो ऐसे ही करेंगे, कोई सुने या ना सुने. Let me come to that particular example. I was hardly 4 or 5 years old in the organization, and करीब 35 साल पहले की बात है, and just married few years back only. I had hardly 3-4 year old son, so had to take care of his education, school, ये सब चीजें ख्याल रखना ही पड़ता है. And top management felt that I can be given a responsibility of a 50 crore project 35 years back. Okay, I was hardly 5 years old in the organization. And by the way, 50 crore project उस जमाने में, उस टाइम पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 3 साल का प्रोजेक्ट था. उसको मतलब ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था कि वो कुछ 6 महीने में खत्म हो जाएगा, बड़ा प्रोजेक्ट था. अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई मेरे को, ठीक है. पहले तो डर भी लगा कि हम कैसे कर पाएंगे. साहब के पास गया और साहब से कि करीब था, कुछ बैठा इनोसेंटली एक बच्चे के जैसे कि सर आपको लगता है ना मैं कर लूंगा. आप ही बता रही हैं कि आपको लगता है ना मैं कर लूंगा. बोला नहीं, कोई डाउट है क्या तुम्हारे माइंड में? कर लोगे, इसलिए तो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, कर लोगे. कोई तकलीफ होगी तो बताना, आ जाना मेरे पास, हम देख लेंगे, बात कर लेंगे, गाइडेंस दे देंगे. एंड बिलीव मी, वो प्रोजेक्ट 3 साल चला. हमारा छोटा बच्चा था, ओके, सिर्फ it was very difficult to take care of. स्कूल दूर हुआ करती थी कि बच्चे को कैसे पढ़ाने जाएंगे, कैसे फैसिलिटी होगी, क्या होगा. तो उस टाइम पर मैंने ये डिसीजन लिया कि बच्चे को बोर्डिंग में डाल देते हैं, और 2 साल के लिए हमने अपने सन को, ओनली सन, फर्स्ट चाइल्ड, उसको 2 साल के लिए हमने बोर्डिंग में भेज दिया, ठीक है. और बोर्डिंग में पढ़ाया, और उस 3 साल, बिलीव मी, ठीक है, उस 3 साल हमने एक भी छुट्टी नहीं ली.
बॉस के पास गया, बोला कि बॉस साल खत्म हो रहा है, हमारी छुट्टी लैप्स हो रही है। बोलते अरे तुमको छुट्टी चाहिए क्या? बहुत छुट्टी चाहिए क्या करोगे? ठीक है, काम चल रहा है, कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, and rest of the history in life. So believe me that those kind of hardship, those kind of challenges, those kind of hard work you go through in your life, which will give you far better results in time to come in long term. Please close the door. Lot of people are moving out. Just be there, please. तो इस तरह के चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं। छुट्टी 10 दिन 20 दिन लैप्स हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी में। 30 साल 35 साल नौकरी करनी है। आप अपनी जिंदगी में कितना कमा लोगे और कितना कर लोगे और कितना आगे बढ़ जाओगे, वो आपका हार्ड वर्क डिटरमाइन करेगा। तो एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ, तो आप सब लोग एक ही मंत्र में बोलूंगा, that don't deviate from the path of hard work, tough work. There is no tomorrow. आज ही हमें ये काम करना है, खत्म करके देना है। जो काम हम 3 साल में कर सकते हैं, 1 साल में करके देंगे। और वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, no matter what I will do it. And that's how things happen. Great, thank you. Any other questions? Yes. Yeah. A very delightful evening to all of you. Myself, Drishti Shukla. I am from BBA first year. I wanted to ask that everybody, all of you have a lot of work experience. So according to you, do you think that skills are really important for our personality and to separate us from the crowd? Do you really think that skills are important to separate us from the crowd and make a different person from everybody too? डॉक्टर साहब स्वाति को ज्यादा एयर टाइम दे रहे हैं। आप सब देख रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक आप देख रहे होंगे कि आजकल बोल ही रहे हैं दैट वी आर बिकमिंग अ स्किल, कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस रूम, बिकॉज नाउ वी आर फोकसिंग experience matters. You started by saying all of you bring a lot of experience. Of course, experience is matters, but companies are now starting to value the skills more. And we are trying to create a balance. I will give an example of my organization, the current organization, where I said that there are more senior people, with 20 years, 25 years of experience who are here. अगर कोई छोड़ के जा रहा है, तो जो 25 years experience वाले छोड़ गए थे, जो हम नया बच्चा ले रहे हैं, हम स्किल देख रहे हैं। चाहे उनको 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का है, लेकिन अगर मान लो मेरे को मार्केटिंग में कोई चाहिए, उसमें दिखता है कि हमारी जाके मार्केटिंग कर सकते हैं, या सेल्स के लिए चाहिए ये सेल कर सकते हैं, वो सेल्स स्किल दिख रही है। अगर उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं भी है, we are giving them opportunities. So we are replacing positions where there was somebody with 15-20 years of work experience who's sitting there with the candidate who's showing the right skill set, even if he has much fewer years of experience. So skill set is very important, and it is becoming even more dominating now. Great. Thank you, Swati. Any faculty would like to ask any question? We will welcome any question from faculty. And if faculty wants, we should ask some question to faculty. We are more than happy. Yes, please. Mic, please. Both sides want fellows to keep mic, otherwise it takes time. Yeah, please introduce yourself and ask a specific question. I'm Himanshu, I'm assistant professor from Mechanical Engineering Department, and it's my pleasure to learn a lot of new things from your research. Thank you. So I want to ask a question individually, that you have told that one should be doing some multitasking things in life. Means you can explore the things, or you can search yourself in new dimensions and new multitaskings, or new researches and innovations. But sir, while doing all these things, sometimes I find that personally I lost touch in the goal orientation. So how can we cope up with the goal, both goal orientation as well as multitasking? That's a very pertinent question. It's a very professor-like question. I like this. See, when we say multitasking or multi-skilling, we don't say that you lose your core.
we say you keep your core, but you build allied areas as well. Right? Today, you would find in the Indian cricket team, there is a batter, there's a bowler, but they're all also becoming all-rounders. They can do multiple things at the same time. So don't lose your identity, but do allied areas as well. Because in today's time, because of the complexity that's happening, you cannot be known for one skill set. If you're in mechanical, that is obviously your core, right? Or your student's core. What else can you build which are allied areas to build more capability to do multiple things? Is the point that I was trying to make. You don't lose yourself in the rush of acquiring more. You acquire what you have to acquire and then build allied areas. And then what will happen is, as the young girl asked there, that how do I get noticed, right? You get noticed because all the people in mechanical will know as much that you know. Now, there are two ways to get noticed. Either you know immense amount of mechanical and you go deep into mechanical, but then you're restricting yourself to mechanical. But if you know what everybody else knows, then you know two other allied areas and you're my choice for hiring. No? That's what I'm trying to say. You have to multi-skill to know more and more about more and more areas. But never lose your core. Please, वो कहावत है, I think डॉक्टर साहब will say that वो आप किसी की चाल चले अपनी चाल भूल गए, वो मत करिएगा. You keep your style and then add along area. That's a very important point. I hope you get that context. So देखा हमसे कि मैं आपका एग्जाम दे रहा था, मैं तो इलेक्ट्रिकल का दे रहा हूँ, वो नहीं कर सकते आप. आप मैकेनिकल का एग्जाम दे के पास होकर और चीज कर सकते हैं. What I'm trying to say. Thank you. Any other question? So what are the 5 pillars of NEP 2020? Respected faculty, what are the 5 pillars of NEP 2020? Google नहीं करना है, मोबाइल नहीं देखना है घर में. Okay, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते आप. Would you please say? What is the प्रकाश in NEP 2020? हाँ sir. Good evening, sir. I am Kailash Pati from Department of Management. Sir, not my question. My thinking is that we are talking about the innovation. But most of the innovations are done by the Western country or America, not by the Indians. Therefore, according to the Professor Joseph Schumpeter, he developed the one theory, that is the innovation theory of the profit. What is the question? Sir, I am coming to the question. And therefore, I think that innovation is inbuilt, which we cannot develop. And therefore, there are the many theories. If you talk about the risk theory, that is also saying this thing, that there are the 3 types of the people: risk leveler, risk averse, and risk neutral. Therefore, sir, I think that we cannot develop or we cannot build the innovator. What is your thinking, sir? Question क्या है? सर, क्वेश्चन ये है कि हम जो है इनोवेटर की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे देश से कोई भी इनोवेटर बनने को तैयार नहीं. देखो सर, ऐसा है, एक थियरी आई थी, उसका नाम है इनोवेटिव थिंकिंग. रिसर्च कैन बी डिफाइंड ओनली 2 words: वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेटिंग न्यू थिंग्स. इसके अलावा रिसर्च में कुछ नहीं. सेम थिंग इज इनोवेशन. Whatever you are doing, how you can do things differently, how you can increase the productivity, and how you can increase the quality of the product by innovation. So you go through deep innovation. I thought you were going to answer me the 5 pillars of NEP 2020. I'll simplify. पहले तो आप ये कह रहे हैं that इंडिया में इनोवेशन नहीं होता, ऐसा मैं मानता नहीं. उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं. इंडिया में इनोवेशन काफी हुआ है. जो लोग मानते हैं ताली बजा दीजिए. इंडिया में इनोवेशन हुआ है. That's it. The problem is that we complicate things. Somebody in the Western country thinks and does it, and we keep thinking क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करूँगा, कौन पूछेगा, कैसे करेगा. अगर आपके मन में इनोवेशन का आइडिया है, तो इनोवेशन also has multiple categories. There is a slight innovation, major innovation, new development, etc. As a professor of management, I will only request you that please inculcate the habit of questioning people and saying what else can be done. The moment you start the habit of asking what else could be done, then you have to develop the habit of asking KKH करना क्या है. So because people can intellectually give a lot of ज्ञान की ऐसे करो, but tell them what to do. Let me ask a question to all of you here. What is the way that you innovate
ammunition. So innovation का कोई degree नहीं है. Any small innovation is a good innovation. But we have to start somewhere. आप पढ़िए, दुनिया की जो बात कर रहे हैं, सारी दुनिया में जो भी major innovations organization है, that all are headed by the Indians. Even Google is headed by Indians. So we will take your question offline. If you want to answer what is the 5 pillars of NEP 2020, so we'll read that later. Now friends, one more point I want to add. All of you listen carefully. You need to be very fair in your work ethics. So I'll give you one example to make your life clear. I interviewed one candidate 1 month back, Sarvajit, who was the blind and chartered accountant. India में only 4 people are there who are blind and chartered accountant. Now this person came to इसका CV मेरे पास आया and recruitment manager told कि सर इसको आप इंटरव्यू मत कीजिए क्योंकि he is blind, कोई फायदा नहीं. So I called him. First attempt में उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया. आपको पता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का परसेंटेज 10-11% से ज्यादा नहीं है. I am very bright boy, blind by birth. So I asked him, Prakash, what I can do for you? So he told, sir, I need a job, I don't have a job. एक जगह काम कर रहा हूँ, मुझे 10,000 मिलता है, 3 साल का एक्सपीरियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, with the MBA in HR. So I need 12,000. So I told, why I should give you 12,000? So he told, sir, I don't have parents. मेरी एक छोटी बहन है, उसकी पढ़ाई का खर्चा 1170 रुपया होता है और वो किराया वगैरह देने पे मेरे पास बचता नहीं, तो यू गिव मी 12,000 सर, तो मेरा खर्चा निकल जाए. तो आई आस्क्ड द रिक्रूटमेंट मैनेजर इफ ए 3 years चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्स, व्हाट इज अवर सीटीसी. सीटीसी मतलब आदित्य ने नहीं बोला, कमिटमेंट टू द कंपनी, इट इज कास्ट टू द कंपनी. सो ही टोल्ड सर 60,000 रुपीस हम देते हैं 3 साल ये को. सो आई टोल्ड माय सेक्रेटरी टू ऑफर 60,000. She offered him 60,000 rupees. He took the offer. He went out. Again came back in my room and he told, sir, there is a mistake. Please, your secretary has made mistake. I asked 12,000 and she gave 60,000. Sir, my apologies. आप please अपने secretary को डांटिएगा. It is her mistake. So please tell her to correct to 12,000. See the values of the person. See the ethics of the person. I told no, Prakash, you deserve much more than that, and this is what you deserve. It is not a mistake. And friends, I tell you, within so short time, we sent him to London for a customer. He got all of it, and he developed such a product that was the leading path breaking for the business of that. So what I need to be clear your fairness is very important. Your ethical values are very important. Innovations, आप जहाँ भी देखिए today's innovation. As Aditya was telling, few years back we never thought कि मोबाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं. Such a great innovation. Well, today everything is there. AI tool, I was sitting yesterday in 1 hour, I can interview 10,000 people like you, and I can see what 50 people is good for me. This is the power of innovation. I can search 100,000 CVs and whatever I want within a second. So there are so many innovations is happening. I only say, friends, that be proactive, be positive, appreciate the people and motivate the people. यदि जामवंत नहीं होते तो हनुमान जी को कोई जानता? हनुमान जी को कोई जानता ही नहीं. It is only Jamwant who identified the hidden talent of Hanuman ji, and that's how he got all the achievements. And then Jamwant again went to Bhagwan Ram and appreciated. नाथ पवन सुत की जो करनी सहसों नजाय से बनी. And then Lord Rama, he felt and showed so much gratitude
न ही कोई तुम समान उपकारी, सुर नर भूमि में उतर गए। I mean, I'm so indebted to you, Hanuman. For life, I cannot. So, friends, finally, what I say, बेहतर से बेहतरी तलाश करो. If you are good, be better. If you are better, be best. बेहतर से बेहतर की तलाश करो. मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो. टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से. टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से. टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो. I want to say, when we Raj asked Sanjay, who is going to win the victory? Sanjay told, Yat Yogeshwaro Krishna, Tatra Partho Dhanurdhara, Tat Sri Vishyor Durga Nitir Madhuranda. Friends, Yogeshwar Krishna is the symbol of vision, setting the direction, setting the strategy. You become Yogeshwar Krishna for yourself. Set your career path, set your life object, set your mission, set your goal, and then become the part, Arjun, who is a symbol of execution, target-oriented behavior, getting things done. Become the Arjuna. Set your direction, set your vision, become Arjun, execute your thing with honesty, dedication, and commitment. Like Mishra ji gave example of taking 50 crores deal with lot of commitment, with personal sacrifice. Then Sri with your Sri is the prosperity, is the Lakshmi, is your CTC, is your bonus, is your monthly salary, is your promotion. Vijay is the victory. If you set your target like Krishna, execute your target like Parth Arjun, then you will have prosperity, you will have growth, you will have leadership, and you will be the winner, you will be the winner, and you will be the winner. Now I request each panelist to give the closing remarks for 1 minute. Start your remarks. 1 minute बोल के डॉक्टर ने टाइम डाल दिया, बट मुझे घर से कहा गया था कि लखनऊ जाएंगे, शायरी किए बिना वापस नहीं आने देंगे. तो शायरी को डॉक्टर साहब का ही शिष्य हूं मैं. तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा. तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर खुद चल के आएगा. थोड़ा और जोर से. क्या बात है? थोड़ा जोर से. इतना प्यार से रुकने का मन करेगा. Nonetheless, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर खुद चल के आएगा. थक कर ना बैठे मुसाफिर, थक कर ना बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा. थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा साइलेंस रखिए, कुछ और बातें आप लोगों से शेयर कर दी जाएं, और हम सब लोगों के लिए भी बड़े आनंद की ये और खुशी की बात है, खुशी का मौका है. तो आप सब लोग हर्षा भोगले को तो जरूर जानते होंगे. हर्षा भोगले मिले ना होंगे लेकिन नाम तो जरूर जानते हैं. फेमस कमेंटेटर, ओके, वेरी फेमस ओरेटर, पास्ड आउट फ्रॉम IIM अहमदाबाद. ओके, आप लोगों को YouTube में हर्षा भोगले का एक बड़ा अच्छा वीडियो मिल जाएगा. IIM अहमदाबाद के कन्वोकेशन में 2005 में जब वो गए थे, उसका जस्ट सर्च करेंगे आपको YouTube वीडियो मिल जाएगा. उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी वहां पर, जो कि हमने भी करीब 2 साल पहले सुनी और हमेशा याद रखता हूँ. तो भाई साहब डॉक्टर द्विवेदी साहब जो बात बोल रहे थे, गुड बेटर बेस्ट, उसमें उन्होंने हर्षा भोगले ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, डोंट रेस्ट टिल you better your best. So good, better, best is fine, but there is no best. Okay,
innovation is all about that. You keep innovating, keep innovating, keep innovating. Okay, things will come, technology will evolve, so many things will evolve in life. So there is no best, ultimate best. Okay, you have to keep bettering, okay, your best every now and then. तो आपका बेस्ट यहाँ है, एक और सीढ़ी ऊपर जाएगा, एक और सीढ़ी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और उस तरह से you have to better your best. So the sentence is don't rest till you better your best. And my point is use best को और better करते रहिए आप. So that's the point. जब हौसला बढ़ा लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बढ़ा लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान। अभी तक तो क्लास कर रहे थे, अब थोड़ा शायराना अंदाज हो गया, मतलब कि वो शाम होने पे होती है ना, शाम की थोड़ी वो मासूमियत, उसकी थोड़ी नरमी शाम की। तो मैं, चूंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, और मुझे मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसको आई एम एक्सेप्टिंग इन फ्रंट ऑफ माय गुरुज, राघवेंद्र मिश्रा सर हैं, गुरु जी हमारे सीएम द्विवेदी सर, और आप लोगों के बीच मैं यार शायरी इतना सुनता हूँ। अभी मैंने 3-4 शायरी सुनी, कुछ चंद लाइनें सुनी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसा मौका आता है तो मैं सुना नहीं, चाहते हुए भी नहीं सुना पाता, तो नोट डाउन करके रखता हूँ। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक फोरम है, उसके इन्वेंशन भी होते हैं, हर सालाना इन्वेंशन भी होता है, उसका प्रोग्राम होते हैं, बहुत ही इनोवेशन पे रहता है, पूरा टॉपिक इनोवेशन पे रहता है। QCFI का कन्वेंशन होता है, लखनऊ चैप्टर भी है, कई सारे चैप्टर भी है QCFI का। उसमें इतना ज्यादा इनोवेशन पे जो प्रेजेंटेशन होता है वो टोटली इनोवेशन पे रहता है, और जो अंदाज रहता है हर प्रेजेंटेशन के बाद, हर एक स्लाइड के बाद वहां पे एक शायरी चलती है, पूरे माहौल को गर्म कर देती है। जैसे भी मैं देख रहा हूँ कि जो पीछे बैठे हैं अब तक बिल्कुल साइलेंट थे, अब उनकी आंखों में स्पार्क है वो सुनने के बाद। लेकिन मुझे तो किसी बात का है कि स्टार्टिंग में ये स्पार्क दिखना चाहिए था, बीच में मैंने बहुत इग्नाइट करने की कोशिश करी कि स्पार्क दिखे, सबके चेहरे मेरी तरफ है, मैं ये देख रहा हूँ फ्रंट टॉप टू बॉटम, लेकिन सर के बड़े गुरुजी का मौका ही नहीं मिला था कि मैं ऐसे माहौल क्रिएट करा जाए बीच बीच में, क्योंकि कुछ ऐसा था भी। बहरहाल एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेसिस ऑन माय लॉन्ग एक्सपोजर एक्सपीरियंस इन HR, कि अपने अंदर कोर वैल्यूज डेवलप करिए। एवरी डे आपको एक कोर वैल्यू अडॉप्ट करना है। अगर एक आदमी एक दिन में, वो चाहे वर्क प्लेस हो चाहे घर हो, सारे वैल्यू सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द होम। कहते भी है ना कि प्रथम जो पाठशाला है वो घर है। आपको हर दिन एक वैल्यू एडिशन अपनी लाइफ में, कैरियर में अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि एलन मस्क तो नहीं बन सकते हैं, बट एक नया एंटरप्रेन्योर तो आप बन ही सकते हैं अग्रवाल टाइप की। बहुत सारी कंपनियां जो स्टार्टअप है, जो आज आप देखते हैं वो स्टार्ट करते हैं तो यात्रा.com से या पवन अग्रवाल जी से, किसी से। इसलिए आपके अंदर एक हर दिन आपको एक वैल्यू एडिशन अपनी लाइफ में करनी बहुत जरूरी है। दूसरा, किसी ने क्वेश्चन किया था, राघवेंद्र सर ने उसके रिप्लाई किया था अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। आप बताइए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, 3 years नो लीव। एक साल में बहुत सारी कंपनियां जिसमें सेवरल काइंड ऑफ लीव है। यार कैसे संभव कि एक साल में कोई आदमी बिना लीव के रहता हो? मैं आपको बताऊं, एक कंपनी में था जिसमें अगर किसी ने अपने पूरे जो, जैसे मान लीजिए 10 SL है, सिक लीव है, मेडिकल लीव है, अगर 10 में उसने 6 से कम लिया है तो उनको अप्रिशिएशन देते थे। वो कन्वर्ट हो जाता था उनका प्रिविलेज लीव में, यानी अर्न लीव में कन्वर्ट हो जाता था। तो वो आप सोच सकते हैं माइंड से, न्यूली मैरिड आदमी हो, नई शादी हुई हो, छोटा बच्चा हो, आप फील कर सकते हैं उस मतलब सैक्रिफाइस को। अपने लाइफ का सबसे ग्रीन टाइम होता है वो, जो आपका जो प्रोफेसर का स्टार्टिंग का 4 ईयर होता है, उसमें
पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सारे होते हैं। सर का एग्जाम्पल मैंने, सर मुझे भूलेगा नहीं अब लाइफ में। मैं अपने आप को ही कई ऐसे मोमेंटम आया लाइफ में जब मुझे 6 महीना छुट्टी नहीं मिली भी तो वो सैटरडे भी और संडे भी नहीं मिली। बहुत शॉर्ट किया था मैंने लाइफ को, तो मैं अपने आप को बहुत महान समझ रहा था। इवन आई कोट इन फ्रंट ऑफ माय ओल्ड जो कॉलीग्स रहे, यार देखो 6 महीने हम लोगों ने कोई छुट्टी ली थी नहीं ली थी ना, लेकिन आज मेरा वो फ्रंट टूट गया। यार 3 साल बच्चा उसको भेजना पड़ा, वो कैसा मतलब उस सर का और मैम का क्या मतलब माइंडसेट रहा होगा जब उसको ड्रॉप किया होगा उन्होंने बोर्ड में, मतलब बोर्डिंग में। तो मैं आप लोग एक मैसेज से जानना चाहता हूँ, लाइफ में जितना हो सकता है आपके अंदर 100% डिटर्मिनेशन का काम होना चाहिए। सपोज दैट यू आर गॉट सेलेक्टेड इन कंपनी, स्टार्टिंग के आपके जो साल है ना वो डिफाइनिंग फैक्टर होंगे। जितना लर्निंग आप स्टार्टिंग के 10 ईयर करते हैं उसके बाद कोई लर्निंग नहीं है, वहां काउंट हो जाता है आपका एक्सपीरियंस। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, देयर आर टू थिंग्स। लर्निंग हो गई, एक्सपीरियंस आपको गेन करना। तो आपको डिटरमाइन रहना है, कोई भी प्रोजेक्ट का आपको मिलता है अगर कोई प्रोजेक्ट, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर देना है। बहुत सारे एग्जाम्पल यही पे आपके बीच के लड़कों ने दे दिया, उन्होंने अपने आप के परफॉर्मेंस को बता दिया कि कैसे अगर हम टेक ओवर करेंगे तो चार्ज मिलेगा। अगर इस एसएमएस को किसी अदर जगह पे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं बहुत सारे, इनको ही भेजा जाएगा, दूसरा आदमी भी आना चाहिए अंदर से। तो आपके अंदर डिटरमाइनिंग पावर होना चाहिए, टाइम आपका रिसोर्स है, यूटिलाइज करते रहिए, और कोर वैल्यूज अडॉप्शन होना चाहिए पर डे बेसिस पे। तीन ही मेरा मैसेज है टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। तो शायरी तो मुझे भी नहीं आती तो मैं ट्राई नहीं करूंगी, बट आई थिंक माय क्लोजिंग थॉट्स टू यू ऑल, I started with the question, so I want to also ask another question before I end. I want to ask you, who is that person that you have most conversation with on any given day? सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं किसी भी दिन? फैमिली फ्रेंड्स, एनी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर? योर फादर? ठीक है, वो अपनी मम्मी से बात करती है, और बाकी बता सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर, ओके, सिस्टर, ओके, मदर, सिस्टर, फादर, हाँ, गर्लफ्रेंड, और कुछ, और कोई किसी से करता है? ओके, सो आई थिंक सही आंसर है, हम उनसे करते हैं, लेकिन एक और इंसान है जिससे हम सबसे ज्यादा बात करते हैं। वेरी गुड, हम अपने आप से। The maximum conversation happens here, inside your head, and what? No matter who's sitting on the stage and how much motivation talk whoever is giving, वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहेगा, अभी चार्जअप रहेंगे, शेर शायरी सुन लिया, आज तो सब फतेह कर लेंगे, और अगले दिन वापस से सब फंस हो गया, है ना? तो वो external motivation lasts for a very little moment. We might listen to a very good motivational speaker, feel motivated, but if we want that motivation to sustain, self-motivation आना चाहिए, and that will happen when you are having that very positive conversation inside your head. When you are telling yourself, आज की डेट में हम कॉलेज का भी वो हो जाए, अरे यार वो बन तो गए लोग बहुत अच्छे, वो तो आईआईटी पास आउट थे, वो तो आईआईटी के बच्चे हैं, हमारा कहाँ ऐसा है? नहीं, आप होगे वो, आप एसएमएस का नाम रोशन करोगे। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, यू विल ब्रिंग ग्लोरी टू दिस एंड आई आल्सो वांट टू शेयर वन स्मॉल स्टोरी दैट माय मदर टोल्ड मी. Brother is in India, and when he was getting trained in their room, उन लोगों का ट्रेनिंग हुआ, सुबह बोला कि कल आपका रेस है, और वहाँ पे लास्ट में जो भी 10% लोग आते हैं बहुत भयंकर पनिशमेंट मिलता है, तो कोई लास्ट आना नहीं चाहता, तो उन्होंने बोला कल रेस है, सब रेडी होके आएंगे। तो क्या भी रेडी होंगे रेस के लिए, अपना शूज सॉक्स यही सब आप अपना देखेंगे कि भाई सब ठीक ठाक है। तो सब लोगों ने अपना किया, पहुंच गए सुबह 4 बजे रेस के लिए। उन्होंने बोला बस एक छोटा सा चेंज है, रेस स्टार्ट होगी तो सारे लोग अपने शूज खोल के एक रख देंगे सामने, एक ही बना देंगे, सबने अपने जूते खोले वहां रख दिए। फिर जब रेस स्टार्ट हो गई, उन्होंने बोला पहले फटाफट अपने शूज पहनने हैं एंड उसके बाद रेस स्टार्ट होगी।
अब जैसे ही और ये स्टार्ट हो गई थी एक्चुअली एंड यू हैव टू क्विकली वेयर योर शूज नाउ आप उस जल्दी में आपने उन्होंने लिया अब जो 5 नंबर मिला कि 6 नंबर मिला राइट पैर मिला या लेफ्ट पैर मिला जो मिला पहले दौड़ गए रेस खत्म हो गई सब दौड़ के आए चलो कोई आगे रहा पीछे ना तो पार्टी हुई पार्टी में उन्होंने बोला चलो सब लोग रेस खत्म करके आ गए वेरी नाइस देहरादून की बात है दिसंबर की वेरी कोल्ड सो उन्होंने बोला स्विमिंग पूल के वहाँ पार्टी कर रहे हैं सबने खा पी लिया अच्छे से फिर बोला कि अभी छोटा सा चीज करना है वापस जाने से पहले वहाँ पे बाल्टियां पड़ी हुई थी इसमें बहुत गर्म गर्म पानी रखा था तो उन्होंने कहा कि हर एक बंदा हर एक स्टूडेंट अपने ऊपर एक गर्म पानी की बाल्टी फेंकेगा और एक स्विमिंग पूल से ठंडे पानी की ऐसा करना है आपको 10 बार ठंडा पानी 10 बार गर्म पानी सबके दिमाग में मम्मी की बात याद आ गई कि गर्म ठंडा करके तो बीमार पड़ जाएंगे सो उन्होंने बोला कि कल तो पक्का सब बीमार पड़ेंगे अगले दिन सबने किया ये अपनी क्लास में गए वापस अगले दिन सुबह क्लास अटेंड करने आए एवरीबडी वाज देयर इन द क्लास द प्रोफेसर आस्क्ड देम दैट यू नो कल आपने गलत साइज का जूता पहन के रेस दौड़ लिया सब लोग दौड़ पाए कि नहीं दौड़ पाए कल ठंडा गर्म कर दिया कोई बीमार पड़ा नहीं पड़ा यहाँ पहुंचे हैं so they said this is exactly what we are going to do in this institution as much as it is about building physical resilience it will start with mental resilience जब हम mental barrier तोड़ेंगे कि ठंडा गर्म करने से बीमार पड़ते हैं नहीं पड़ेंगे गलत जूता पहन के दौड़ नहीं सकते मतलब बेसिकली स्वाति जी क्या कहना चाह रही है वो कह रही है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए क्लियर है फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए अब आपका एमबीए का कोर्स हो या इंजीनियरिंग का भरपूर होना चाहिए तो आपको excellent participation and I want to request you to give a very loud applause for the panelists. You all have been excellent audience. A very sincere gratitude to Sarath ji, all the faculty members, all the staff, all the students, every organizing committee. For our outstanding CXO graduates, please cheers. Please cheers. Please cheers. Thank you. Thank you everyone. Firstly, I would just want to say, please मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं. So today we have some alumni amongst us who have made SMS proud with their extraordinary performance in the corporate. Now, I would request Dr. Chandramouli Dwivedi sir to felicitate Mr. Ritesh Khanna, PGDM 2009 and 11 batch, currently working with HDFC Bank. So please come on the stage. सर जी आप आइए सर Our another alumni Mr. Abhishek Malik, BTech Mechanical 2009 and 13 batch, founder of ABM Sales. Our next alumni, Mr.
2016 batch, currently associated with Lulu India Shopping Mall Private Limited. Next is Mr. Shashank Srivastava, MBA 2017 and 19 batch, currently working with Corporation of Indian Industry. And next is Mr. Ali Raza, MBA batch 2017 and 19, currently working with ITC Limited. Next is Mr. Vivek Singh, MBA 2017 and 19 batch, currently working with ITC Limited. Next is Ms. Prakriti Saraf, MBA 2019 and 21 batch, currently associated with ICICI Bank. Next is Mr. Akshit Chawla, MBA 2020 and 22 batch, currently associated with Berger Paints. Next is Ms. Astha Srivastava, MBA 2021 and 23 batch, currently working with Panasonic Life Solutions. And last but not the least, Mr. Utkarsh Kashyap, BCA 2021 and 24 batch, currently working with Zomato. I request to all the luminaries, please come forward for the group photograph.
Please come forward for the group photograph. Now I would request our respected CEO sir, Director sir, DG Technical sir, AD sir to please come on the stage for the felicitation of our honorable guests. I would request CEO sir to present a memento and shawl to Dr. Chandramouli Dwivedi sir. I request CEO sir to kindly present a memento and shawl to Mr. Ravendra Mishra sir. Now, I would request Director sir to present a memento and shawl to Mr. Pramod Kumar Tripathi sir. I would request AD sir to present a memento and shawl to Mr. Aditya Sareen sir. Now, I would request DG Technical sir to kindly present a memento and shawl to Ms. Swati Dobra ma'am.
Thank you, Ananya. I wanted to take a moment to express my sincere gratitude for the inspiring and informative conference of Shaping Future Leaders. The event was a remarkable experience. The provide invaluable insight, leadership development, future tech, and the skills necessary to empower the next generation of leaders. The engaging session, thought-provoking discussion, and the opportunity to connect with the industry experts have left a lasting impression on us. We look forward to applying the knowledge gained and staying connected for future events. Now, I want to invite Professor Dr. Om Prakash sir for vote of thanks. Thank you, everyone. So, what an excellent and insightful program. First and foremost, I would like to thank our own Dr. C.M. sir, Group CHRO, and Director Jivika Healthcare Private Limited. Thank you, sir, for making this dream event a possibility for us. Next, I would like to thank our eminent panelists, Mr. Ravindra Mishra, President HR, Garwari Technical Fibers Limited, Mr. Aditya Sari, Head Corporate and Business HR, Tata Power, Ms. Swati Dupta, Head of HR, South Asia, India Group, Mr. Pramod Kumar, General Manager, HR, Bajaj Energy Limited. Thanks to all of you for your enlightening presentations and discussion. From our internal dignitaries, I would like to thank our CEO, respected Shah Singh sir, for his blessings and benevolence, due to which this program became a reality. Then our director, Sir Dr. Bhatnagar, and BT Technical, Sir V.R. Singh, for their inspiration and gracious guidance to make this event a success. I would also like to thank Director Admin Dr. Jagdish Singh sir, ED Professor Dharmendra sir, Dean Engineering, Professor Hemant, our registrar, S.N. Shukla sir, and other dear faculty members to grace this occasion. Finally, I would like to mention the name of CGM, Mr. Suren Srivastava, who was quite instrumental in organizing this event, and his team members. Last but not the least, I would like to thank our dear students as well. Thank you, all of you. Finalists request Saratji for a minute. They want to hear for a minute. No, just yes. Okay, you go ahead. Okay. So friends, we had such a wonderful event, and I want all of you should give a standing ovation to Saratji and the panelists. Such an outstanding event, so nice, so amazing, and all the messages are so accurate. They have given everyone, and I'm sure they will have engaging and lot of enriching experience from all the panelists and their relationship with the SMS group Lucknow going forward. Thank you so much. Thank you. And next thing now, I would like to request all present to rise for the national anthem. Jai 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 Jai
Now, I would like to request our eminent panelists to have a side visit. You want to have a side visit and also. Guys, photograph. रोक लेना वहाँ पे, रोक लेना वहाँ पे।